It's history. So when we study Mahabharata, we are undergoing an understanding of history. Understanding history inevitably, please think it over, understanding history inevitably includes history of understanding. Understanding history inevitably includes the history of understanding. History of understanding is more personal. Understanding history is social. So, what Vyasa has done in Mahabharata is a great epic. What he has done is, history of understanding means personal experience. It inevitably includes the understanding history. So personal experience. Personal experience means it is called in our scriptures Swadhyaya. Swadhyaya means studying oneself. When we study an epic like Ramayana or Mahabharata or something else, we unknowingly study our own mind, our own self. When we study Mahabharata, unknowingly we study ourselves. Unless this happens, that study becomes superficial. That's why it is called Swadhyaya. Swadhyaya na pramadaha. Swadhyaya is, so Adhyayana means, study means, it is inevitably a self-study. It becomes like that. So Vyasa has seen everything as his own experience. History as one's own experience. One's experience as history. The way of history reveals in personal dialogues. And personal dialogues explores unknowingly the way of history. This is the clue Vyasa has given in Mahabharata, and I, to the extent of my ability, I have followed this in my work on Mahabharata. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Ravi Jyoti Deka. I am the son of Dr. Pranavjyoti Deka, who couldn't attend this August occasion and ceremony because of his ailing health. I would like to just take a very brief moment to explain, try to attempt in a third person what sort of a writer he was, or he is rather, he's still there. My father, as I said, even though now I'm going to second person, was always a stark realist. He was a realist in his real life, and his writing had been a reflection of his views on life. He never tried to gloss over life. He never tried to romanticize it in any way. He never tried to make it more funny than it is or more tragic than it is. If I would have to draw a comparison, like Maxim Gorky, he knew the police and he knew the thieves. He knew the smugglers. He knew all sort of antisocial elements. He met the highest echelons of power. He never aligned himself with any political or religious ideology. He never tried to justify the thieves. He never tried to justify the police. He acknowledged their existence. His writing had been a tapestry of realism comparable only to Chekhov. He saw life, he wrote about it. As a person, he never searched for any recognition as a writer. He primarily wrote for himself.
He started very early. Early part of his writing career, he dedicated to writing plays. He was blacklisted during the emergency as an Naxalite sympathizer, even though that is the farthest from the truth possible, because he always, despite never having any political bent, he was definitely no lover of leftism, and he still isn't. So, but that blacklist, apparently, somehow he never came back to radio after that. I'm still told how, as children, people used to huddle around the radio to listen to Dr. Pranajiti Dega's plays. Later part of his life, he dedicated himself primarily to non-fiction. He had always been a very meticulous researcher, extremely pedantic. He spent around 17 years writing the first English to Assamese dictionary because he felt the Assamese language was not having the right vocabulary to make it, it has been stuck in an archaic loop. So as a result, virtually every linguistic department in the state, every press house has his dictionary on the table. In a way, he is a person who reinvented the language, the modern Assamese language. Yet, his first love continued to be short stories. And one thing that never changed was his view on life. I mean, in his writing, he just wrote what he saw. He never forced it down to anyone. He never lobbied for any awards. And he was most nonchalant. In fact, he had to be dragged across to receiving several awards by the organizers because he always had the one excuse, I'm too old for all this. And with this very short, I hope, introduction, I would like to thank you very much for giving me this occasion to speak about my father. Thank you so much. सभी को मेरी तरफ से और मेरे बोरो भाषी लोगों से मैं आप लोगों को नमस्कार किया हूँ। मेरा लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम है मैं कॉलेज लाइफ नहीं मिला, तो क्लास 10 तक पढ़ाई किया था एसामीज में और ऐसे आ गया। तो क्वेश्चन कुछ करेंगे क्या? पहले क्वेश्चन से अच्छा होगा, क्वेश्चन करने से कोई लोग प्रश्न करिएगा क्या? I want to. Anyone, not only the media, I think other writers also. थैंक यू। मैं पहले बोला मैं कॉलेज लाइफ मेरा नहीं था और ये भी था मैं लिखने के लिए ये फील्ड में आऊँगा ऐसे भी मैं नहीं सोचा था। और ये जो अवार्ड मिला, ये अवार्ड भी मैं कभी भी नहीं सोचा था इसको मैं मिल पाएंगे। लिखता था मैं क्लास 5 से और इसलिए लिखता था मेरा घर पे थोड़ा सा समस्या था। साल का बच्चे में मेरा माँ चला गया था पिताजी को छोड़कर, इसलिए मैं घर पे जितना टाइम में रहा था बिना माँ के साथ, पिताजी के साथ बिना माँ, तो उसी टाइम पे मैं मेरा जो सोचने वाला जो भावना है उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लास 5 से मैं लिखने की शुरू किया। और ये लिख के क्या मिला क्या है, कोई आदमी किसी बोलता था या अच्छा हुआ तो बुरा हुआ, लेकिन मेरा इच्छा ये था
मेरा जो बैठना है, मेरा जो भावना है, मेरे अंतर में निहित हुआ था, इसको मैं लिख के मैं थोड़ा प्रकाश करूंगी। पहले मैं बोलूँगी माँ क्यों छोड़ गया था पिताजी को। माँ छोड़ गया था, माँ का उम्र उसी टाइम पे जब पिताजी ने विवाह किया था, उसी टाइम पे केवल 13 साल का था माँ। पिताजी उसी टाइम पे 75 ईयर्स था। माँ दूसरे पत्नी था। पहले पत्नी मरने के बाद माँ को लाया थे, और इसलिए माँ दूसरी पत्नी थी पिताजी का। तो उसी टाइम पे जो समस्या है मेरे साथ, मैं उधर जितना मन में दुख मिला था, ये दुख को मिला करके कुछ कुछ लिखने के लिए मैं सोचा, और ऐसे ही लिख के ये पोजिशन अवस्था में आए हैं। प्रथम अवस्था में जो लिखा हुआ था क्लास 5 में, उसी टाइम में मैं माँ के ऊपर से ही ज़्यादा लिखा हुआ। आदमी के लिए मैं लिखता हूँ, आदमी को समझाने के लिए, समाज को किसी मैसेज देने के लिए, और कभी कभी मैं मेरे दिल को थोड़ा सा आनंद पाने के लिए मैं लिखता हूँ। ऐसे करके जब 5 से मैं लिखा हुआ था, तो माँ के ऊपर से लिख करके मैं सोचा था आदमी यौवन काल में या ये किशोर काल में जितना किसी भूल करेंगे तो पिछले उम्र में क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए लिखता हूँ। और ऐसे ये जो किताब में मैं मिला था, अभी मिला साहित्य अकादमी अवार्ड, यही किताब में भी एक कहानी है, एक 13 कहानी है इधर किताब पे, लेकिन एक कहानी ऐसे है। मैं हमेशा जब गया था बाजार में, तो एक औरत को दुकान में दिखता था, और दुकान एक तो दुकान, छोटा सा दुकान, एक तो टेबल के ऊपर यह औरत चॉकलेट करीब 60 से 70 चॉकलेट बिकता था। और ये भी था उनका उम्र, तब वही टाइम में, उसी समय में उनका उम्र करीब 60 प्लस था। मैं उनको पूछा, ये जितना आपका जो बिकने वाले जो चॉकलेट है, ये कितना का होगा? मैं विचार करके मैं जो गिनती करके मैं सोचा, करीब 100 से भी ज़्यादा नहीं होता था ये चॉकलेट का, जितना चॉकलेट था उनका टेबल में। और इसको बिक करके वो क्या किसा कितना इनकम करता था, मैं उसी ये सोचकर उनको पूछा था इनके बारे में। तब वही मिला, उनके बारे में भी एक कहानी है उनके जीवन में। और ये कहानी था ऐसा, जब वो यौवन था, यौवन का टाइम में, समय में, वो भी दूसरा क्या नहीं, दूसरा आदमी से वो चला गया था।
घर घर से निकल गया था। और बहुत दिन के बाद वो आ करके फिर अपने घर में आने सोचा, लेकिन घर का आदमी उनको पट्टा नहीं दिया, घर का आदमी उनको आश्रय भी नहीं दिया। इसलिए वो ऐसा करके बिक करके जितना समस्या के सम्मुखीन होने लगा। इसको देख करके थोड़ा सा रंग भी लगाया, थोड़ा सा कुछ लगा करके ये कहानी लिखा था। कहानी का नाम है जीवन जिउ सफरनि दाखन, बड़ो भाषा में जिउ सफरनि दाखन। ये हिंदी में बोलने से ऐसा होगा जीवन सफर का दाग, जीवन सफर का लगे हुए दाग, ऐसा होगा हिंदी में बोलने से। तो हम तो सफर कर रहे हो, जीवन भर हम सफर कर रहे हो, जन्म से लेकर अभी तक। तो ये सफर में क्या क्या हो गया, कैसे होता है, किस लिए होता है, कभी कभी सोच करके ये कहानी में लिखा था। और यही किताब में मैं ये पुरस्कार मिलकर बहुत सुखी हूँ। मैं चाहती हूँ समाज का जो लोग कभी कभी भूल गलत करता है, उन लोगों को कोई लोगों को मेरे तरफ से बोलने के लिए मैं कोशिश किया। और मैं अपने जीवन भर कैसे चलना पड़ता है, इसको मैं थोड़ा सोच करके धीरे धीरे मृत्यु तक कैसे जाने पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा सोच लेने के लिए सुযোগ भी मिला। यही है हमारा। तो अभी क्वेश्चन कुछ करने से ऐसा होता था, क्वेश्चन कौन करेगा क्या? थैंक यू। सर, आप सबसे अनुरोध है 2 से 3 मिनट के बीच में ही अपनी बात रखें, क्योंकि जी, हमारे पास धन्यवाद। बहुत सारे धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय वर्मा डोगरी से हूँ, जम्मू कश्मीर से। सभी अवार्डीज को मेरा नमस्कार और बधाई, और सभागार में सारे सज्जन सीनियर सारे लोग हैं, उनको मेरा प्रणाम। असल में लिखने का जो सिलसिला है वो स्कूल के दिनों से शुरू होता है मेरे गांव में। जैसे हर गांव में भारत में जैसे भाषा और संस्कृति साथ में जुड़ा हुआ है, और उसमें रामलीला का मंचन जो है वो बड़ा कॉमन है। वहीं से मेरे किसी मित्र ने बोला कि आप जो रामलीला होती है तो रोज़ाना आप एक कविता लिख के शाम को सुनाना है। तो वहाँ से ऐसा लगता है कि मैंने कविता लिखी नहीं, मेरे से लिखाई गई। और विधि ने भी ऐसा तय किया, और सीनियर हमारे जो राइटर लोग थे, गुरुजन थे, उनका भी आशीर्वाद मिला। तो स्कूल से चलते चलते कॉलेज और सब लिखना शुरू हो गया। असल में मैं हर क्षण अपने आप को सवालों में घेरा महसूस करता हूँ। समाज में, आसपास, हर व्यवस्था में मुझे सवाल 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 दिखते हैं। जब जवाब नहीं मिलता तो मैं व्यंग के माध्यम से, चाहे कविता हो चाहे गजल हो, उस माध्यम से मैं सटायर का इस्तेमाल करके वो सवाल को ही पलट देता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उसको अच्छे सूक्ष्म रूप में हो, गजल में हो, कविता में हो, जैसे भी। तो आधुनिक जो डोगरी साहित्य है उसका गजल का जो रिश्ता है, और उसके साथ जोड़ते हुए मैंने कॉलेज के दिनों से फिर गजल का शुरुआत की, जो भी छोटा मोटा आता था। तो ये किताब जो दौं सदियां एक सीर है,
2 सदियों में बहती हुई एक धारा। इसमें 721 कपलेट्स हैं। असल में इसकी जो शुरुआत होती है वो, मैं एक हमारे डोगरी संस्था है वहाँ कवि सम्मेलन होता है मुशायरे में, तो हमारे रॉयल डायनेस्टी या डॉक्टर करण सिंह से साहब जो हैं वो सदारत करते हैं, और सदारत करते हुए मेरे गुरु प्रोफेसर कुलदीप सिंह जिंदराई और सीनियर लोग वहाँ होते हैं। तो गज़ल पढ़ता हूँ मैं कि आओ कुल्ली सदारत कर रहे हैं महाराजा, और वहाँ उसका जो मतलब है कि आओ कुल्ली महल और लच है, सारे पुंजा सत्थर पाचा है, आओ झोंपड़ी और महल को एक कर दें और सभी हम आसन जो है वो धरती पर लगाएं। शेर थे कुछ उस किस्म के व्यंग। मुझे लगा राजा के सामने इस किस्म के प्रश्न जो है और गजल काफी चुभने वाली होगी, लेकिन हुआ उल्ट। जब कवि सम्मेलन खत्म हुआ तो हमारे एक मित्र के माध्यम से, जो 15 भाषाओं के जानकार हैं, डॉक्टर करण सिंह साहब, वो बोलते हैं कि विजय आप सवेरे जो है कल महल में आ जाइए और मेरे साथ नाश्ता करें। मैंने सोचा जी गांव का लड़का और ये फक्कड़ सा बंदा और इसको बुला रहा है, राजा बुला रहा है नाश्ते के लिए, इसमें कुछ बात है। मैं उसके कपलेट बढ़ते गए 10 से 11, 21, 50, फिर मैंने बताना बंद कर दिया। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। वहाँ मेरे साथ ये होते हैं कि 1200-1300 कपलेट्स हो जाते हैं। फिर ये जो कोरोना काल आता है तो इसको मैं संकलन करके, तो मैं 721 इसलिए हैं क्योंकि 50 के दशक में हमारे आधुनिक डोगरी में गज़ल का शुरुआत हमारे स्मैलपुरी साहब थे, कृष्ण स्मैलपुरी जी, उन्होंने करा था। और 5 वो दशक 2 ये 500-700 हो गए, और 21वीं सदी है इसलिए 721 कपलेट हैं। या यूं कहिए 721 ही प्रश्न है, वही व्यंग है, वही व्याख्या है। और ये प्रेरणा मैंने ली क्योंकि मराठी के 142 कपलेट्स की गज़ल थी लंबी, और ये हालांकि 7वीं सदी से जब जो अरबी से शुरू होता है सिलसिला, उसमें है, कसीदे में चला जाता है मामला लंबा। मैंने कहा थोड़ा सा तो पार किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ बंदिश में इतने शेर हैं, इतने हैं, फाइल आतन, ये टेक्निकल, ये जाएगा तो करते करते ये जो सिलसिला अभी कोरोना काल तक चल रहा था, तो अभी इसको छपा के, तो ये उस कंसेप्ट के साथ कि डोगरी की गज़ल की यात्रा भी है, ये मेरी भाषा की यात्रा भी है। और मैं अपने पाठकों का, प्रोफेसर्स का और जनता का बड़ा आभारी हूँ कि प्रगतिशीलता के जो प्रश्न व्यंग के माध्यम से, उनको इन्होंने उस तरीके से सराहा और स्वीकार किया है। मेरे ख्याल में अब पाठक जो है वो काफ़ी प्रबुद्ध है और मेरी भाषा काफ़ी विकास पा चुकी है और पा रही है। धन्यवाद। सभाघर में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरे हार्दिक नमन और अभिनंदन। मैं सोरखाइवम गंभिनी त्रिपुरा के रहने वाली हूँ, और जिस घर में मेरी जन्म हुई है उसी घर की लगभग सभी सदस्यों को संगीत से जुड़े हुए थे, और बहुत ही पुस्तक प्रेमी थे सभी सदस्य, और घर में छोटा सा लाइब्रेरी भी था। तो मेरी बुआ जी की उत्साह से जब मेरी उम्र 4 साल की थी, उस टाइम से मैं स्टेज परफॉर्मेंस शुरू की। मैं रिसाइटेशन करती थी, तो इसके लिए मुझे नए नए कविताएं बाय हार्ट करना और कवियों की आत्मजीवनी पढ़ना, ऐसा शुरू किया है 4 साल से। तो उसी समय से मेरी कविता के साथ आत्मीकरण हुई है। जब मैं क्लास 6, 7 और 8 क्लास में आई, तब मैंने रामायण, महाभारत, गीता से लेके बहुत सारे शास्त्रीय ग्रंथ पढ़ना शुरू की, क्योंकि तब से मैं क्लास 7 से संस्कृत पढ़ती थी। और उसी समय से मैं खेल खेल में, मजाक मजाक में मैं कविता लिखती थी। ये जो अभ्यास है मेरी, ये क्लास 11 तक चलता आया। उसके बाद क्लास 12 में आने के बाद पिताजी ने कहा कि ऐसे अभी से तुम मजाक मजाक से, खेल खेल में लिखना छोड़ो, तुम थोड़ा सीरियस हो के लिखना शुरू करो। तभी से मैं डायरी में लिखना शुरू की। पर जब मैं क्लास 6, 7, 8 में थी, कभी नहीं सोचा कि मैं एक दिन आगे जाके कवि बनूंगी।
ऐसे करके आया और मेरी पढ़ाई बंगाली मीडियम में थी, तो मैं शुरू में बंगाली में लिखती थी और क्लास 12 के बाद जब मैं कॉलेज में आई उस टाइम से मैं मणिपुरी भाषा में लिखना शुरू की। मेरी मातृभाषा मणिपुरी है, पर जिस क्षेत्र में मैं पली बड़ी हूँ और पढ़ाई की हूँ उस क्षेत्र में मणिपुरी टोटल पॉपुलेशन की ओनली 6% है, जिसके लिए हमारे उस जगह पे मतलब त्रिपुरा में हमारी भाषा की मातृभाषा की चर्चा सिर्फ परिवार के अंदर ही सीमाबद्ध था। और इस लैंग्वेज में या इस मणिपुरी भाषा और साहित्य पढ़ाई करने के लिए स्कूल कॉलेजेस में कोई मौका नहीं मिली मुझे, और मार्केट में भी एक किताब तक खरीदने को नहीं मिलता था। आज से 35-40 साल पहले की बात है, जब हमारी मणिपुरी बुक्स खरीदने के लिए इम्फॉल से लाना पड़ता था। ये हर किसी की रीच के बाहर है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने लिखना शुरू की मणिपुरी भाषा में। मणिपुरी भाषा संस्कृति और समाज के बारे में उतना समझ मुझे नहीं था, पर मेरे पिताजी से हिस्ट्री ऑफ मणिपुर, मणिपुरी लैंग्वेज, सोसाइटी, कल्चर, ये सब के बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज मिली है। तो एक प्रकार की मेरी पापा मेरे लिए एक लिविंग लाइब्रेरी जैसा ही थे वो। तो ऐसे करके मैंने लिखना शुरू की, क्योंकि जिस स्थिति में, जिस क्षेत्र में मैं पली बड़ी हूँ, उस समय मुझे लगा कि अगर मेरी भाषा, समाज और संस्कृति को आगे लेके जाना है तो अपनी मातृभाषा में लिखना चाहिए। ऐसे करके मैं मेरा लिखना शुरू की। लिखने की इंस्पिरेशन मेरे परिवार, मम्मी पापा दोनों ही है। और परिवार के अलावा अगर साहित्य के क्षेत्र में कहें तो रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और जीवनानंद दास की भावना, चेतना और मतादर्श मेरी चेतनाओं को जागरूकता दिलाई है। और जिस काव्य ग्रंथ के लिए मुझे ये साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए चुना गया है, वो काव्य ग्रंथ के नाम है याचंगबा नंग हल्लो, जिसका मीनिंग है शाम तुम लौट जाओ। शाम यहाँ पे मृत्यु को, आने वाले मृत्यु को सूचित करते हैं। तुम लौट जाओ मतलब शाम को हम लौट जाओ बोलने से लौटा नहीं सकते, मृत्यु को हम लौट जाओ बोलने से लौटा नहीं सकते। एक जीवन की पूर्णता तभी आता है जब हमारी मृत्यु होती है। पर मनुष्य जीवन में दो तरह की मृत्यु आती है। एक है दैहिक मृत्यु, दूसरी है मानसिक मृत्यु। अगर दैहिक मृत्यु से पहले मानसिक मृत्यु आ जाए तो इससे ज़्यादा बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकते। इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच हमारे जीवन, 2 दिन का जो जीवन है, ये पेंडुलम की तरह लटकता हुआ है। इसलिए 2 दिन की ये जिंदगी में हमारे जितना कर्म करना है वो ख़त्म करके जाना है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस धरती को सजा के जाना है। ये है मेरी याचंगबनंग हलो काव्य ग्रंथ की मूल जो थीम है। और इस काव्य ग्रंथ के मूल विषय है मानवतावाद। मनुष्य के अंदर अगर कोई मानवतावाद या मानविकता जिंदा न रहे तभी हमारे समाज में हिंसा और समस्या आते रहते हैं। इसलिए समाज के जितने भी इज़म मतवाद है, सबसे ऊंचा मैं मानवतावाद को ही रखती हूँ। इसलिए मेरे काव्य ग्रंथ के मूल विषय है मानवतावाद। सिर्फ मानवतावाद के बारे में ही नहीं, पोल्यूशन फ्री सोसाइटी कल्चर के लिए भी मैंने लिखी हूँ। और सिर्फ पोल्यूशन फ्री सोसाइटी कल्चर ही नहीं, हमारी सोच, विचार, थिंकिंग भी पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। जब मेरी चिंतन पोल्यूशन फ्री होगी तब हमारे समाज पोल्यूशन फ्री होगी, ये मेरी विश्वास है।
और एक अनोखी विशेषता है मेरे काव्य ग्रंथ की, जो है ज़ीरो बाउंड्री कंसेप्ट। ज़ीरो बाउंड्री कंसेप्ट अभिव्यक्त हुआ है बांग्लादेश से, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। उनकी नाम है अफजल आली। ये 2017 में अभिव्यक्त हुआ था और 2018 में ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। मुझे ये कंसेप्ट बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैं एक माइनॉरिटी लैंग्वेज ग्रुप की हूँ। ये जो ज़ीरो बाउंड्री कंसेप्ट है, इसमें हमारे समाज की जितनी भी विभेद रेखाएं हैं, जिसके ज़रिए हमारे सोसाइटी में विरोध, अस्थिरता और कृत्रिम हिंसा ये सब पैदा होती है, ज़ीरो बाउंड्री कंसेप्ट उस सभी सीमा रेखाओं को पार कराने के लिए है और आर्ट और लिटरेचर को अपने दायरे और सीमा रेखा से मुक्त करने के लिए। ज़ीरो बाउंड्री कंसेप्ट के मूल उद्देश्य है आर्ट और कल्चर को डिलिमिटेशन दिलाना, और इस कंसेप्ट की दूसरी जो उद्देश्य है वो है ये जो हमारे विश्व, ये एक देश एक घर जैसा है। इसका कोई भौगोलिक सीमा रेखा या राजनीतिक सीमा रेखा नहीं रहेगी। इसमें कंसेप्चुअल रिवोल्यूशन नहीं रहेगी और इज़म का कोई एलिमिनेशन नहीं है इसमें, पर इंक्लूजन हम कर सकते हैं। साहित्य और कला को ग्लोबलाइज करने की ये कंसेप्ट है। मेरी काव्य ग्रंथ में ये जो ज़ीरो बाउंड्री कंसेप्ट, इसको ही कैप्चर करने की छोटी सी प्रयास की हूँ। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। A very good morning to everybody present. I will speak in English and Hindi, freewheeling between the two. I have got this award for a book in English, but my book moves freely through English, Urdu, and Hindi. Likewise, I will also use these three languages spontaneously here. My name is Neelam Sarangor. I come from the city of Allahabad, now named Prayagraj. I am a retired professor of English at the Allahabad University. And this is my 13th book of fiction. Just a brief word about my journey as a writer. Like the previous author so impressively put it, I began writing as a childhood game, as a very, very small child, discovering the pleasure of creating realities with words. I had no brothers or sisters. My parents were both teachers. I was left to myself. So I did what many children do. I created imaginary companions with all their episodes of life. I created dialogues, children speaking to each other. Today I hear my grandchild doing the same. Children do talk to each other, to themselves. They create fictitious characters and adventures. I was doing that all the time and enjoying this parallel world which words and the mind can create. At that point of time, it was a game, and it was the discovery of worlds which words and imagination could create. And that was where my relationship with writing began. I too had a very encouraging playmate father who played along with me, encouraged me, read out to me, told me stories, and there were storytellers, in my family. And I began rhyming only as a game, only to experience the pleasure of something taking shape, something assuming plot and design. And that is when somewhere unconsciously I decided that this was what gave me greatest joy. I got a lot of encouragement in school,
I used to write plays for puppet shows which children used to put up. And then thereafter, I began writing poems and stories. Initially, I was very, very deeply involved with writing poetry. I wrote till I was 20, but I have always been extremely dissatisfied with what I was writing. So at some point of time, I decided that I was not happy with the poetry I was writing. And I felt that fiction would suit me better. And it did. So I began writing short stories and sending them to magazines. That was a time when a lot of literature appeared in magazines. And I'm talking of the late 1960s and early 70s. My stories were selected, sometimes rejected. I had so many rejection slips that you could cover a whole wall with them. But I went on writing and sending, hit and miss, hit and miss. And then some magic happened. I've always felt that if you are passionately involved with something, something inexplicable happens. The universe does respond to you. I got an offer from Penguin India. I was just any old writer writing stories and sending them to magazines. But the newly opened Penguin office had a dynamic young CEO called David Devedar. He was traveling. He happened to pick up a magazine. He happened to like a story. And he wrote to me, care of my university address, saying, I liked your story. Do you have any more? We would like to publish them. I almost fainted because this was magic happening. And magic has happened many times like that, like this award, which I never expected to win. Since then, it has been a long journey. I have written books about my native city, Allahabad. I have written about Kolkata. I have written about England. I have written about Kanpur and Lucknow cities, locating my work in the worlds that I know best. And I will talk now about this particular book. This is a fictional biography of a famous singer called Janki Bai Allahabadi, born around 18, which sometime, the date is not certain, 1880 or 1889, and she died in 1934. जानकी बाई इलाहाबादी ग्रामोफोन एज की एक प्रमुख गायिका थी और उनका नाम उन्हीं के शहर में धुंधला पड़ गया है. As I have written, it is a misled memory. अपने ज़माने में वो अमिताभ बच्चन से कम नहीं मानी जाती थी हमारे शहर में, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनका नाम मिट सा गया था. एक वक्त जी, इसीलिए इलाहाबाद का ही तो कि संबंध में मैंने अमिताभ बच्चन का नाम लिया. मैं एक इलाहाबाद की संस्कृति के ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो उस दौर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जानकी बाई इलाहाबादी के बारे में, और उस छोटे से आर्टिकल में वो पढ़कर मैं इतनी आकर्षित हुई इस पर्सनालिटी के साथ. कलाकार तो बहुत होते हैं, लेकिन कलाकार और कला का जो एक स्पिरिचुअल रिश्ता होता है, जो जीवन के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में उनकी जिंदगी बहुत ही कठिन थी. She was a conflicted being, and I was attracted to the persona behind, the personality behind the persona. जानकी बाई एक हलवाई की बेटी थी बनारस में. She somehow found herself through very adverse situations in a brothel in Allahabad. उनकी माँ तवाइफ थी, और जो तवाइफ होती थी वो शास्त्रीय संगीत की बड़ी जानकार होती थी, पुराने उस्तादों की वो शागिर्द होती थी, और जो इन घरों में, कोठों में संगीत की एक बड़ी बड़ी रिच परंपरा प्रिजर्व रहती थी. बस मेन स्ट्रीम संगीत उनको इज्जत नहीं देता था. तो जानकी बाई की तालीम संगीत में, और साथ ही साथ उनकी जिंदगी जो कष्टों से भरी थी, उसने कई प्रश्न, जैसे किसी ने कहा कि प्रश्नों से पूरा साहित्य जनरेट हो सकता है, तो जो प्रश्न मेरे मन में था कि हम सब
बड़े छोटे कलाकार हैं। हमारी जिंदगी, खास जिंदगी क्या है? हमारी फिजिकल जिंदगी, हमारी जीवन के एपिसोड, कि हमारे मानसिक जो रील दौड़ती रहती है हमेशा, जो रचना दौड़ती रहती है, कौन सी हमारी मेन स्ट्रीम जिंदगी है और कौन सी हमारी बाहरी जिंदगी है? कभी लगता ये है, कभी लगता वो है। एक जुगलबंदी सी चलती रहती है अपनी आउटर लाइफ में और अपनी क्रिएटिव लाइफ में। तो इस तरह से और भी प्रश्न थे कि हम जो लिखते हैं वो हमको क्या मिलता है, ऊपर से मिलता है? कौन हमारे जरिए लिखता है? हम तो नहीं लिखते हैं, कौन हमारे जरिए गाता है? और वो कौन सा गीत है? वो हमारी रचना की गीत है कि किसी और के बहुत बड़ा गीतों और साहित्य का संग्रह कहीं है जिसके लिए हम चैनल बन जाते हैं? तो मेरे लिए ये एक तरह की आध्यात्मिक जर्नी हो गई ये किताब। मैंने बहुतों को ये बात कही है कि मेरी और किताब में पहले से कमीशन हो जाती थी, ये एक किताब है जो कमीशन नहीं हुई। और मेरे लिए ये उस तरह था जैसे हम सन्नाटे में अकेले कमरे में खुद जो गाते हैं, उससे जो आनंद मिलता है शायद वो ऑडियंस के सामने गाने से नहीं मिलता है। मुझे नहीं मालूम था कि कोई भी इस किताब के लिए ऑडियंस है कि नहीं आज की दुनिया में। साथ ही साथ संगीत के इतिहास में इतना खूबसूरत कहानियां हैं, और ये कहानियां ऐसी हैं कि संगीत वो धारा है जिसमें ना हिंदू ना मुसलमान, कला ही अपनी मजहब है। तो इन सब कहानियों को मैंने अपने पिता से सीखा जो बहुत शास्त्रीय संगीत में माहिर थे, और I wanted to collect it all before it is lost. So I researched, I worked hard, I combed the accounts of music, and I put it together as a fictional biography of an admirable woman. So that is what this novel is about. Thank you very much. Good morning, everyone. There are a lot of friends in the audience and also among the award winners. So I'm really happy to be here sharing a few things about my journey as a writer and also the award-winning book. I happen to be a bilingual writer. I write in English, mostly criticism and also poetry. And I write in Malayalam. I began as a writer of short stories in Malayalam, right from the college days. But somewhere sustaining critical writing and short story writing became very challenging. Sometimes certain forms choose the author, so I was maybe chosen by this medium of critical writing. It gives me as much pleasure as writing a poem or a short story. This must be my 50th year of publishing serious articles in Malayalam. So in a way, when this award came, I never thought that this kind of recognition would come my way. And when I published my first critical volume of essays, that was a study of Adhunikata, Aksharavum Adhunikatayum. I published way back in 92. And it came out from a small publisher. It was taken note of by serious readers, but then it won Kerala Sahitya Academy Award. That award also gave me, when M.T. Vasudevan Nair was the president of the Academy, it was a really very good recognition. And maybe that launched me as a writer, and I continued my journey. When I actually began working on this book, it must have taken about 10 years. It's not a literary history kind of book. Actually, in this book called Malayala Novel in the Desha Kalangal, I actually examined what's the relation between literary form and social formation. Somewhere deep within, novel is a very complex form. You are just listening to what my colleague just said. The novel doesn't tell a story. It also enacts the
change in the society. It actually captures something much deeper than a life story, or it goes much deeper. So I was rather dissatisfied with a lot of critical work on Malayalam novel, and I felt Malayalam novel has actually had a very complex journey. So why not examine it with greater depth, with this kind of focus between the literary form and social formation. And from late 19th century to almost early 21st century, I have traced the evolution, and my focus has been not on merely what literary historians mention or talk about, like progressive or modernist or postmodernist. Can we actually find ways of looking at the novel from within the novel itself, from within the novelistic kind of writing? There are critical terminologies, critical models which are available. And I have found I have actually spent more than 7 to 8 years working on this book. And when I actually felt I cannot take it forward, I had enough left for another book. So I thought, let me actually call it a day. It's, as it stands, it's about 260 pages in 3 parts. And I trace the very nodal movements in the history of. Actually, I was very fascinated when my Kannadiga friend talked about the history of understanding and understanding of history. You see, there are elements of this history of understanding. You can also use the novelistic form to understand how understanding itself evolves. So it was a journey of discovery for me. And when this book actually gets noticed, and just when I signed, I don't know whether it will ever be translated into another language, English, but definitely I am sure if it comes into English, because I refer to a whole lot of novels from other languages, including Kannada. I have Anantamurthy, I have Hindi novels, Adhagav, I discuss, and Bhalachandra Nimade's novels I discuss. So it's not a history or writing on Malayalam novel alone. It's also a study to understand how Malayalam novel evolved along with Indian novel, along with novels in other languages. So as someone who has lived outside Kerala for the last 50 years and who is familiar with Marathi, Gujarati, Hindi, and some other Indian languages, I have put my experience of being an Indian into this book. Thank you very much. I am E.V. Ramakrishnan, thanking you. Yes. Yeah. Is it on? This is Dr. Vinod Asudani from Sindhi language. And it is very interesting when you say that you have come up in this book, the complex relationship between the literary form and the social formation. I am really fascinated. I'm extremely fascinated what you are talking about. Now, this is something new that you have come up in this book. I would like to simply ask here, and then I will have a personal conversation with you on this. Now, when you talk of the relationship between the literary form and the social formation, would you like to say that the literary forms are so important, so powerful, that they can impact the formation of the social groups or social formation, or vice versa? Or the creative writer simply derives the inspiration from the social formation and then he comes up with the different forms, especially in the fiction writing, as we are talking about novels. And novels have the larger
forms than any other genre in the literature. So how do you see this journey from literary forms to social formation? It goes like this one way, or the social formations respond to the literary forms? Thank you, sir, for a very interesting question. In fact, I would say there is a certain dialectic between the formation, social formation, and the literary form. I will give you an example. If you look at the early Malayalam novel called Indulekha, which is considered a classic. Today, perhaps we have only that novel to understand how Malayalis negotiated the idea of modernity. You see, what we call colonial modernity or the late 19th century kind of modernity. So novel becomes a form of understanding how we, in a way, conceived, you see, the idea of modernity in our own society. Perhaps without the novel, I do feel in India, we would have never actually had a clear idea of novel is a form of dialogue, negotiation, a kind of self-critical way of examining conceptual worlds. So I do feel the novels, in a way, create certain kind of, you see, models for reality. Perhaps it's easier to say novel is a reflection of reality, but I would very strongly argue novels participate in constituting reality. They constitute reality. Professor Nimade is very fond of saying, if there were no novels, we would have never actually learned how to love. You see, the romance was possible. Perhaps novel made it possible for us to understand how, you see, the idea of love itself changes between men and women. Maybe we can have a conversation. I will stop here. Thank you very much for that interesting question. मैं सादिका नवाब सहर हूँ। उर्दू के लिए मुझे अवार्ड मिला है राजदेव की हमराई नॉवल के लिए। मुझे पता नहीं था कि मैं किस विधा में, किस जेनर में मैं काम कर सकती हूँ, और अक्सर हम लोगों के ज़िंदगी भर हम लोग यही सोचते रहते हैं। इंस्पिरेशन जब बाद में इस पर आती हूँ, मैं पहले मैं ये बताऊँ कि मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। बचपन से ही हमारे फादर, जब मैं 18 इयर्स की थी उस वक्त वो उनका डेथ हो गई थी, लेकिन वो बचपन से ही वो पहचानते थे मेरे अंदर के टैलेंट को। वो हमेशा इनकरेज करते थे। वो इधर उधर की, वो कहते थे इस माइक पर बोलो या इस प्याज पर बोलो, कहानी लिखो, इस तरह की बातें वो करते थे। और कोई कहानी बोलते थे और लिखने के लिए कहते थे। वो इंस्पायर करते थे। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में भी उर्दू सब्जेक्ट लेने के लिए कहा। मैंने उर्दू, हम पहले से ही लैंग्वेज वाले हैं, स्कूल में भी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन, मराठी, तो हमारे स्कूल में 5 लैंग्वेजेस थी। अरबिक भी हम लोग ट्रांसलेशन के ज़रिए हम पढ़ते हैं, और भी चीज़ें पढ़ते हैं। मुझे लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इसीलिए मैंने 3 लैंग्वेजेस में MA भी किए, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में। और पढ़ाने की वजह से भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। पहले मेरे पेरेंट्स बचपन में मेरे लिए बहुत एक सहारा बने, मेरे फादर, उसके बाद मेरी मदर, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। लिखती थी तो सब खुश होते थे हमारे ससुराल वाले। लेकिन जिस वक्त डॉक्टर गोपी चंद नारंग, बहुत फेमस बड़े क्रिटिक उर्दू के, उन्होंने जब तारीफ़ की अंडमान में एक सेमिनार में, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि हाँ भाई इसमें तो ज़्यादा कोई टैलेंट है। तो उन्होंने कैलिबर को वैसे पहचानते थे, लेकिन ज़्यादा पहचाना उन्होंने, ज़्यादा सपोर्ट किया और हमेशा हर जगह ले जाते। और जहाँ भी मैंने कहानी कोई लिखी, मैंने इस नावल को जब लिखा तो मेरी ऐसी आदत है कि मैं किसी जगह को बेस करती हूँ, उस जगह पर कहानी उठाती हूँ। तो उसके लिए कम से कम 3-4 बार वो मुझे चिपलुन ले गए। महाराष्ट्र का एक इलाका है,
वहाँ चिपलून ले गए, परशुराम क्षेत्र ले गए, वहाँ की पूरा कल्चर हमने चेक किया, देखा। तो ये मैं कहती हूँ कि मेरा 90% जो है मेरे हस्बैंड का है, ये अवार्ड 10% मेरा है, इसलिए कि उन्होंने इसको पढ़ा भी है, उन्होंने राय भी दी है और बहुत सपोर्ट किया है मुझे। जो 10% मेरा है उसमें मेरे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट। और एक बात मैं कहती हूँ कि मैंने जब भी कुछ लिखा है, चाहे छोटा सा एक शायरी का पीस ही क्यों ना लिखा हो, हमेशा उसको वाहवाही मिली है, हमेशा तारीफें। मेरी ज़िंदगी में रिजेक्शन शायद था ही नहीं। मुझे याद नहीं कि मुझे कोई चीज़ मेरी रिजेक्ट हुई। लेकिन शादी के बाद मैं बॉम्बे से खपोली चली गई, ज़रा इंटीरियर बॉम्बे में, और वहाँ पर लेकिन मुझे गॉड ने अलग अलग टाइप के लोगों से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। वहाँ मैंने पढ़ाया, आदिवासी बच्चों को पढ़ाया, हर टाइप के लोग मुझे मिले और मुझे समझ में आया। और जिस वक्त बच्चे मेरे बड़े होने लगे तब तक तो मैंने शायरी पर ही अपने आप को बनाए रखा, क्योंकि मुझे कुछ लिखना था, मुझे कुछ इजहार की ज़रूरत थी, मुझे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत थी। तो मैंने शायरी को अपना रास्ता चुना, क्योंकि वो कम वक्त में लिखी जा सकती थी। खाना बनाते हुए, रास्ता चलते हुए, हाथों पर लिख लिया, किसी पेपर पे लिख लिया। लेकिन जब थोड़े बच्चे बड़े हो गए और फिर मेरे समझ में भी आया, मैंने जब पहला नावल लिखा, मैं अलग अलग चीज़ें आजमाती रही हूँ, तो जब मैंने पहला नावल लिखा तो वो इसकी इतनी ज़्यादा धूम हो गई कि मुझे समझ में भी आया कि मुझे ये लाइन मेरे लिए सही है। ये चुनने के लिए हमें ज़िंदगी आधी से ज़्यादा हमारी निकल जाती है। मुझे लगता है आई वॉज अबाउट 50 years old व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग नावल। स्टोरीज और सारी चीज़ें उसके बाद में मैंने जमा की, लेकिन मैंने जो कैरेक्टर उठाए, हमेशा मुझे ज़िंदगी में कैरेक्टर नज़र आए वही उठाए। मैंने कोई इमेजिनेशन में वाले कैरेक्टर नहीं उठाए, जैसे मैडम ने कहा। तो हमने जिंदा कैरेक्टर उठाए। मेरे नावल की राजदेव की अमराई, इससे पहले कहानी कोई सुनाओ मिताशा, जो कई ज़बानों में छपी है। उसके बाद जिस दिन से पहला नावल मेरा औरत थी केंद्र में, लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा कि फेमिनिज्म सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस ज़माने को। तो मैंने फिर इसमें मेल कैरेक्टर है, मेन है राजदेव, और सारा कल्चर मैंने 3-4 जनरेशन को उठाया है और किस तरह से आज़ादी के ज़माने से पहले से उठाया है। और मेरे नावल की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगती है और लोगों को भी लगती है, वो रीडेबिलिटी है। एक बार आप नावल शुरू करते हैं या मेरी कहानी शुरू करते हैं तो उसको आखिर तक आपको पढ़ने की ख्वाहिश होती है। तो ये मेरी ख़ास, मैं अपने आप को समझती हूँ इस बात में। और भाषा का जहाँ तक सवाल है, मैंने उर्दू भी पढ़ाया एज ए लेक्चरर, हिंदी भी पढ़ाया, और मेरा इलाका मराठी लोगों का है, मराठी भाषी लोगों का। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी भाषा जो है सबको समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें उसको, ज़्यादा लोग जानें। तो इसलिए मेरी भाषा भी वैसी होती है जैसे प्रेमचंद की भाषा होती है। मैंने बहुत से लोगों से सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ समझा है। मुझे बचपन से किताबी कीड़ा कहते हैं, तो ये मेरे काम आया है। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत से सुना, बहुत शुक्रिया। आप खड़ा होकर बोलेंगे, बोलने में सुविधा होती है, नहीं बैठने में ही दिक्कत होती है। साहित्य अकादमी के सभी 24 भाषाओं के विजेता को मेरा सादर प्रणाम, और विदेशियों को मेरी ओर से सादर नमस्कार है। अकादमी के पदाधिकारी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। मैं बासुकीनाथ झा मैथिली भाषा में लिखता हूँ, मैथिली में भी बोलता हूँ, लेकिन यहाँ चूँकि ये संवाद है, मीडिया वालों से संपर्क है, उनकी सुविधाओं के लिए मैं अपनी बात हिंदी में ही कहूँगा। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ गद्य में ही लिखता हूँ। वैसे कोई ऐसा इनकार नहीं कर सकता है, जैसे कहता है कि सब आदमी संगीत जानते ही हैं, जन्म से ही गुनगुनाता सब है, संगीतकार हो चाहे नहीं हो। उसी तरह सभी कवि होते ही हैं और उस हिसाब से मैं भी कवि हूँ, लेकिन मैं कविता नहीं लिखता हूँ।
तो गद्य ही लिखता हूँ। और गद्य के बारे में भारतीय चिंतन की दृष्टि से गद्य के बारे में कहा गया है, गद्यम कवि नाम निक्षम वदंत, कवियों के लिए ये टेस्टिंग स्टोन है गद्य लिखना। तो उस दृष्टि से जब काव्य शास्त्र की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो आसान है काव्य लिखना और गद्य लिखना कठिन माना जाता है, और वो संजोग से मैं गद्य ही लिखता हूँ। तो फिर ये कहने का मतलब ये नहीं है, मेरी मनसा ये नहीं है कि काव्य लिखना कुछ नहीं है। और पहली की मान्यता के हिसाब से काव्य संपूर्ण साहित्य का सूचक था। तो उस काव्य का अर्थ ही होता था साहित्य, जो बाद में आकर के गद्य और पद्य में बट गया, और उस हिसाब से गद्य को कवि नाम निक्षम वदंत कहा गया है। तो उस हिसाब से मैं कठिन रास्ता चुना और गद्य में लिखता हूँ। गद्य के भी दो रूप हैं, आप सभी जानते हैं, विद्वान हैं, विदुषियाँ हैं, आप जानते हैं, कथेतर गद्य और कथा गद्य। तो कथा गद्य जिसे उपन्यास अभी चर्चा इन्होंने की है, नॉवेल्स की, इन लोगों ने चर्चा की है नॉवेल्स की, इन्होंने प्रश्न किया है नॉवेल्स पर। तो ये गद्य लिखना और इससे भिन्न गद्य लिखना, दोनों में अंतर है। उस दृष्टि से भी मैंने मेरा फील्ड है, मेरा क्षेत्र है कथेतर गद्य लिखना, कथाओं से भिन्न, जिसे आत्मसंस्मरण होता है, आलोचना होती है, आर्थिक निबंध होता है, साहित्यिक निबंध होता है, वो विधाएं जो हैं उन्हीं में से मैंने एक अपनाया है निबंध लेखन। और उस निबंध लेखन में भी जो पुस्तक पुरस्कृत हुई है उसका नाम है बोध संकेतन। बोध संकेतन का अर्थ ही है कि ये संकेत है, ये ओनली एक इशारा मात्र है। किसके लिए इशारा है? समझने के लिए। किसको समझेंगे? साहित्य को समझेंगे। किस साहित्य को समझेंगे? एक्चुअली ये भूमिकाओं का संग्रह है। अन्य पुस्तकों पर मैंने जो भूमिका लिखी, उन्हीं भूमिकाओं की एक संग्रह अलग से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गई, और जो लोगों ने इसे अच्छा माना है और कहते हैं कि ये अच्छी किताब है, पुरस्कृत हो गई। मैं भी गदगद हूँ। वो एक बात हुई, लेकिन वो भूमिकाओं का संग्रह है। तब भूमिका लिखने के लिए बहुत पहले की भी एक रचना है उसमें। तो उसमें है कि अब ये जिस समय शुरू में नए थे तो किसी ने कहा कि मेरी किताब की भूमिका लिख दीजिए। अब मेरे ही सामने प्रश्न उठा कि मैं क्या लिखूं उनके लिए, इनकी रचना के लिए। तो उनकी जो रचना थी उसके संबंध में जानना और फिर पाठकों को जागृत करना। भूमिका लिखने का अर्थ ही होता है कि पाठक भूमिका को पढ़ेंगे तब उसके अंदर की बात पढ़ेंगे, तो पाठक ये समझ जाएं कि इसमें क्या चीज़ है और कैसे कही गई है। क्या चीज़ है वस्तु भी और कैसे कही गई है शैली भी, दोनों के संकेत एक आध दो चार पन्ने में ही बताना है। तो ये कठिन काम किया मैंने, शुरू किया, और वो आज हालांकि किसी व्यक्ति की रचनाओं पर ही मैंने भूमिका लिखी है, तो उसमें भी विविध प्रकार की बात हो गई है। व्यंग लेखक के संग्रह है, उसकी भी भूमिका लिखी है, रेखा चित्र है, उसकी भी भूमिका लिखी है, और कथा भी है तो कथा की भी भूमिका लिखी है। तो तात्पर्य ये है कि आप चाहे कुछ भी लिखें, विधा आपकी कोई भी हो, गद्य हो, पद्य हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके समझने का तरीका, समझने के तरीका का ये एक समझिए गुटका है, मैंने ये दे दिया है कि ये आप कैसे समझेंगे किसी बात को। तो ये आलोचना भी नहीं है, समालोचना भी नहीं है, और फिर भी इतिहास भी नहीं है, लेकिन आलोचना, समालोचना, इतिहास, साहित्य सबका उत्स इसमें मिला हुआ है। इसलिए ये कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन ये पाठकों के लिए आसान रास्ता अपनाया गया है, और वही रास्ता चुन करके ये पुस्तक आई है और लोगों के सामने है।
और आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसलिए मैं बार बार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विनोद जोशी है। मैं अपनी मधुर और महान गुजराती भाषा का रचनाकार हूँ। मैंने लिखना क्यों शुरू किया, मैं क्यों लिखता हूँ, इसके बहुत कारण हैं, लेकिन एक दो बताऊंगा। ऐसा पढ़ने में आया था कि साहित्य शब्दार्थ की कला है। साहित्य की जो व्याख्या की गई, इसमें शब्दार्थौ सहितौ ऐसा कहा गया। मुझे ये लग रहा था कि ये अर्थ क्या है। भाषा तो ठीक है, मुझे मिल गई मेरे परिसर से, मेरे परिवार से, लेकिन ये जो अर्थ है, मैंने देखा कि नए नए अर्थ भाषा पे डाले जाते हैं, भाषा से जो अर्थ हैं वो निकाले जाते हैं। तो ये कोई नए प्रकार का कन्फ्रंटेशन है। ये शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विद आह्लादकारिणी, ऐसा जब मैंने सुना, पढ़ा, तब मुझे लगा कि ये शब्द और अर्थ से ज़्यादा जिसका महत्व है वह आह्लाद है। ये आह्लाद जो है वह भाषा से मिलता है या भाव से मिलता है। मैंने सोचा कि ये जो भाव है ये प्राकृतिक है, भाषा है ये प्राकृतिक नहीं है। तो मेरी सोच दूसरी दिशा में चली गई। तो ये भाषा क्या है? मैंने देखा कि अपनी बनाई जो चीज़ है वह इटर्नल नहीं है, भंगूर है। तो भाषा भी अपनी बनाई हुई है, कभी ये मिट जाएगी। ये भाव जो हैं वो आगे से चले आते हैं, आगे चले भी जाएंगे। तो मेरा लक्ष्य इस भाव पर गया। लेकिन साहित्यकार था तो भाषा के सिवा मेरे पास कोई माध्यम नहीं था। अगर मैं संगीतकार होता तो मेरे पास ध्वनि होती, अगर मैं चित्रकार होता तो मेरे पास रंग होता, लेकिन ये प्राकृतिक माध्यम मेरे पास नहीं थे। मेरे पास केवल भाषा थी, एक भंगूर माध्यम था। तो मैंने सोचा कि मैं भाषा को अगर लांघ पाऊं, इसको उपयोग में लेके इसमें से बाहर अगर मैं निकल पाऊं तो मैं कुछ कर पाऊंगा। तो ये कन्फ्रंटेशन का परिणाम मेरा साहित्य है। मेरी करीब 40 किताबें हैं। मैंने बचपन में 2 भाषा संस्कार पाए। मैंने पितृपक्ष से, क्योंकि मैं यजुर्वेदी वेद पाठी ब्राह्मण संस्कारों में पला, तो संस्कृत भाषा मेरे जहन में आई। मातृपक्ष से मैंने लोक भाषा का परिचय किया, तो ये लोक भाषा मेरे में उतरी। ये दोनों संस्कारों को लेकर मैंने साहित्य लिखा। मैं जब हाई स्कूल में था तभी शार्दुल विक्रीडित, मंदाक्रांता, हरिणी, शालिनी, मालिनी, इन सभी छंदों में लिखता था। और मैंने छंद पढ़े नहीं थे, मैं जानता नहीं था कि मैं ये छंद में लिख रहा हूँ। गुजराती की एक बहुत बड़ी पत्रिका है कुमार, इसमें जब मेरा काव्य शिखरिणी छंद में प्रकट हुआ तो मुझे लगा कि ये तो पत्रिका है, उनका काम है छापना, तो छपी होगी। लेकिन वरिष्ठ साहित्यकारों ने जब बताया कि कुमार में कविता छपनी ये कोई बड़ी बात है, तभी मुझे लगा कि मुझसे कुछ हो गया है। तो ये एक इंस्पिरेशन था और मैं आगे लिखने लगा। लेकिन ये मेरा जो कन्फ्रंटेशन था वो सातत्यपूर्वक मेरे भीतर चला। मैंने गीत लिखे,
मैंने सोनेट लिखे, मैंने बड़ी लंबी कविता भी लिखी। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं भाषा का जो रित है, इसका जो सत्य है, वह पहचानना चाहता था कि मैं भाषा को लांघ पाता हूँ या नहीं। मैंने इस तरह से बहुत शिफ्टिंग किए, तो मुझे लगा कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो जन समुदाय से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मेरे मित्र विनोद आसुदानी ने अभी पूछा था कि अपनी संस्कृति से और भाषा के संबंध से साहित्यकार को क्या लेना देना है, तो मुझे ये लगता है कि अपनी जो सोच होती है भाषा की और इसके अर्थ की, ये बार बार बदलती है। इसका असर स्वरूप पे, काव्य के, साहित्य के स्वरूप पे बहुत ही पड़ता है। जैसा कि अब हम माइक्रो फिक्शन की ओर जा रहे हैं, बृहद नवल की ओर से माइक्रो फिक्शन में जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा प्रबंध काव्य लिखूं जो छोटा ना हो, इतना बड़ा हो कि पहले तो उसका पाठक ऐसा ही सोचे कि इतनी लंबी कविता कैसे पढ़े। मैंने 7 सर्ग में 49 खंडों में एपिक रेंज का प्रबंध काव्य लिखा, सैरंध्री के विषय को लेकर, जिसको अवार्ड मिल रहा है। ये सैरंध्री महाभारत का जो कथानक है विराट पर्व का, इसको लेकर मैंने लिखी। सैरंध्री का अज्ञातवास जो है, मैंने सोचा कि यह 1 वर्ष का था, लेकिन हम सबका अज्ञातवास जो है वो पूरी जिंदगी का है। सैरंध्री अज्ञातवास में द्रौपदी नहीं है, याज्ञसेनी नहीं है, द्रुपद सुता नहीं है, धृष्टद्युम्न भगिनी नहीं है, वह केवल एक दासी है और दासी रूप में ही उसको रहना पड़ रहा है। जैसा कि हम लोगों को जहाँ हम हैं, जिस पद पर हैं, जिनके साथ हैं, जिनके साथ हमारा कुछ भी ताल्लुक है, अगर वह कोई व्यक्ति है, अगर वह कोई स्थान है, अगर वह कोई वातावरण है, हम अपने आप को मैनेज करते रहते हैं। तो हमारा यह अज्ञातवास तो पूरी जिंदगी का है। तो मैंने देखा कि ये सैरंध्री का पात्र जो है वह इस पूरी मनुष्य मीमांसा के लिए बहुत ही उचित है। तो मैंने इनको लेकर यह प्रबंध काव्य लिखा। मेरी बहुत सी कविताएं गाई गई हैं, बहुत से भारत के जाने माने सिंगर्स ने गाई हैं। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, वाइस चांसलर भी रहा। पढ़ना पढ़ाना ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से आया, मैंने साहित्य को बहुत निकट से देखा। लेकिन यह भाषा के साथ जो मेरा यह युद्ध चल रहा है वह सैरंध्री के बाद अभी भी चालू है। मैंने यह सोचा है कि इस ज़माने में शबरी नहीं है, राम नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा है। इस ज़माने में राम और भरत नहीं है, लेकिन भ्रातृभाव नाम की कोई चीज़ है। तो भावनाएं जो हैं यह युगों को लांघकर इस क्षण तक पहुंच सकती हैं। तो साहित्यकार का यह धर्म है, यह मैं मानता हूँ। और अभी तो मैं लिख रहा हूँ, पता नहीं कि यह कविता का जो प्रवास है, जो यात्रा है, कहाँ तक चलेगी। ये मेरा जो काव्य है सैरंध्री, मैंने इसके बहुत अलग अलग श्रोताओं के सन्मुख करीब 34 बार इसका पाठ किया है। और इतनी लंबी कविता जो 2.5 घंटे तक एक साथ लोगों ने सुनी बिना कोई विराम के, तो मुझे लगा कि माइक्रो फिक्शन के इस ज़माने में भी हम ऐसी रुचि पैदा कर सकते हैं कि जिसमें श्रोता को बिना किसी विलंबन इतनी लंबी कविता भी, और मीटर में लिखी हुई कविता जो कि चौपाई और दोहरे में है, ये सुनने को जी करता है। मेरी बहुत श्रद्धा है कि मेरी भाषा गुजराती भारतीय भाषाओं में जब आज यहाँ इस तरह से इसकी जो ये ली जाती हैं, नोटिस की जाती हैं, तो आगे भी इसका कुछ ऐसा महत्व बनेगा। और मेरी जो शिक्षा है, जो मेरी सर्जन की इच्छा है, वह ऐसे ही
भाषा के साथ समांतर रूप से आगे बढ़ेगी, आप सबके आशीर्वाद से। धन्यवाद। आदरणीय विनोद जोशी साहब, क्योंकि मैं कवि हूँ, आपने जो कहा उस पर मैं एक आपसे भी टिप्पणी चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि भाषा जो है वो इम्परमानेंट या पावरलेस एक माध्यम है उन भावों को व्यक्त करने के लिए जो कि इटर्नल हैं। क्योंकि मैं भी पोइट हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है उन इटर्नल एक्सपीरियंसेस और इटर्नल इमोशंस को अभिव्यक्त करने के लिए, इसलिए मैं भाषा प्रयोग कर रहा हूँ। अब होता यह है कि समथिंग विच इज इटर्नल एंड परमानेंट, वी आर ट्राइंग टू कैप्चर इट इन समथिंग विच इज इम्परमानेंट एंड द पावरलेस। तो ये जो एक इनकंसिस्टेंसी, एक असंगतता निर्माण होती है भाषा के उपयोग और भावों के अभिव्यक्ति का, तो इसके लिए क्या आपको इसलिए ऐसा लगता है कि कविता जो है वो हमेशा ही इट इज इन द स्टेट ऑफ कैप्चरिंग, इट इज नॉट कैप्चर्ड बट इट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ बीइंग कैप्चर्ड, और इसलिए प्रत्येक पाठक उस कविता से अलग अलग अंदाज में, अलग अलग शेड्स में कुछ न कुछ कैप्चर करता है, क्योंकि हमारी भाषा कुछ भी डेफिनेटली कहने के स्थिति में नहीं है। इस पर मैं चाहता हूं कि आपकी टिप्पणी हो। वैसे आपने क्वेश्चन तो नहीं किया, समर्थन किया है। मैं बिल्कुल ही मानता हूं कि भाषा अपने भावों को प्रकट करने के लिए संपूर्ण नहीं है। जब भाषा माध्यम को मद्देनजर न रख के सामग्री बन जाए तभी भाषा का महत्व सिद्ध होता है। जैसे कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ऐसा अगर हम भाषा से सुनाते हैं किसी को तो इसका जो संगीत है, जो नाद है, जो ध्वनि है, उसका असर होता है। मैंने एक सोनेट लिखा था जब मैं हाई स्कूल में था तब, जड़ाफ विज मेघ डम्मर डिबांगमा सौसरी खचाक खच खच चिरी झड़ड़ झुम्मरो उतरी। ये पृथ्वी छंद में है। अगर इसकी भाषा समझ में न भी आए तो भी इससे ये पता चलता है कि इसमें कुछ इधर उधर का कुछ हो गया है प्रकृति में, ऐसी कोई बात है। तो भाषा संदर्भ को छोड़ दें और इसके आह्लाद को अगर आप तक पहुंचाए, तद्विद आह्लादकारिणी, ऐसा कुंतक ने कहा है। तद्विदों को वह आह्लाद देती है। तद्विद मतलब उनको, उनके जो जानकार हैं उसको, सभी के लिए ये नहीं होगा, उनके जो जानकार है तद्विद, इसी को तो कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाषा के साथ काम करना यह साहित्यकार की वैसे तो मजबूरी है, लेकिन यह एक प्रकार का युद्ध भी है। हम लड़ रहे हैं प्रकृति से कि तुमने समंदर बनाया तो मैंने समंदर की ऐसी कविता लिखी जिसमें हम मौजें फील करा सकें। तुमने चंद्र को बनाया आसमान में तो हमने चंद्र की ऐसी कविता की कि जिसका सौंदर्य हम भाषा के माध्यम से अपने पाठकों को पहुंचा सके। तो एक प्रकार का यह सामना है प्रकृति से। साहित्यकार कलाकार हैं तो कलाकार का वजूद इतना ज़्यादा है, इसका कारण भी यही है कि हम कुछ कर सकते हैं। आपने जो किया है इससे हम कुछ कम नहीं हैं। आपको भी हम बता दें कि हमारे पास भी भाषा के माध्यम से कुछ कहने के लिए ऐसा है। क्यों हैंगओवर आ जाता है कोई नॉवेल पढ़ के, कोई नाटक देख के या कोई डांस देख के? तो इसका मतलब ये है कि हम प्रकृति के साथ अपने माध्यम से भावक को जोड़ते हैं। बस यही जोड़ना ही तो कर्तव्य है, तो भाषा के द्वारा करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम स्वरनजीत सवी है, पंजाबी भाषा तो। जिवें अनुपम जी ने कहा पहला भी तुसीं 2-3 मिनट दे विच कंपाइल करनी है गल, ते 2 सवाल ने कि थोड़ी जर्नी हाउ यू स्टार्टड दैट, ते दूसरा कि इस किताब दे बारे। सो
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ। ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡੈਥ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਥ ਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਦਿਨ 2 or 3 days ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਅਖਾਣ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੇਰੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉਸੇ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ 2 ਮਨੁੱਖ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨਾੜੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾੜੂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਕਈ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਿਆਂ ਨੂੰ 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਫਾਰ ਐਂਡ ਅੰਗੇਂਸਟ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਨਾਦ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰੀ, 130 ਪੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਪੋਇਮ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਯਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ 13th ਬੁੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਚਿੱਪ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 370 ਪੇਜਸ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਰਹਿਨੁਮਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਸ਼ੇਡਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ AI ਦਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਖਲ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਨ ਦੀ ਚਿੱਪ, ਚਿਪ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ AI ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਦ ਟਸਲ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰੀਫਾਈਂਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 40% ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ AI ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਕਲਪਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ੇਡਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਧੁਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਰ ਸਟੇਅਰ ਮਤਲਬ ਲੇਅਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗਦਾ, ਧੁਨ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਡਰ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਟ ਪਿਆ। ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਸੈਂਸ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश परिंकर है। मैं गोवा से बिलोंग करता हूँ। मुझे लगता है कि आप सब लोग, ज़्यादातर लोग गोवा में गए होंगे। गोवा इज़ अ वेरी डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन आप जिसने गोवा देखा है, मुझे लगता है ज़्यादातर कोस्टल एरिया में घूमे होंगे। We have 110 kilometers of coastal area and ज़्यादातर वहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है। मैं जहाँ से हूँ it's a 70 kilometers from पेंजिम। मेरा इलाका पहाड़ी इलाका है जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और आपको मालूम रहेगा कि जो मांडवी नदी है जो पेंजिम में आते हैं, जो मेरे घर से यहाँ वहाँ तक मुझे कर्नाटक से आती है। इट्स अबाउट 110 किलोमीटर्स लेंथ है उसका। एक्चुअली आई एम बिलोंग टू एग्रीकल्चरल फैमिली। मेरी मम्मा पापा अनपढ़ है, पाठशाला में नहीं गए, तो ओनली आई एम फर्स्ट जनरेशन। मैंने पढ़ाई की पोस्ट ग्रेजुएट तक। आपको मालूम रहेगा कि हमारी छोटी भाषा है, बहुत छोटी भाषा। कोंकणी कोंकणी पीपल नॉट मोर देन 15 lakhs। महाराष्ट्र में लोग हैं हमारे कोंकणी लोग, गोवा में है वी आर जस्ट 14 to 16 lakhs population in Goa. Out of that maybe 10 to 11 lakhs कोंकणी people. मैंगलोर में भी है हमारे गोवा कोंकणी लोग हैं और केरला में भी है। आपको मालूम रहेगा कि हमारी जो भाषा है, अधिकृत जो लिपि है ये देवनागरी है, रिकॉग्नाइज बाय साहित्य अकेडमी। हमारी भाषा 5 लिपि में लिखी जाती है। वन इज देवनागरी, second one is Romi Lipi. Mostly the Catholics people use that Romi Lipi in Goa. Kannada Lipi in Karnataka. Malayalam Lipi in Malayalam. And also एक भटकल है केरल में, सॉरी कर्नाटक में, जो मुस्लिम रहते हैं, ये फिर से अरबिक लिपि में लिखती है। और आपको मालूम रहेगा हमारे गोवा का इतिहास तो बहुत अलग सा है। 1510 में पोर्चुगीज आ गए और बाद में कन्वर्शन हो गया। हाँ, कन्वर्शन हो गया और बाद में आपको मालूम रहेगा कि ज़्यादातर लोग हमारे गोवा छोड़ के गए, जो केरल में और कर्नाटक में बस गए। तो मैं जो लिखता हूँ तो ज़्यादातर मैं मार्जिनाइज्ड लोग जो है, मार्जिनाइज्ड जो पीपल्स है, उसके बारे में लिखता हूँ मैं। हमारे वहाँ जो सोशल सिस्टम्स है, कल्चरल सिस्टम्स है, जो बहुत से अलग से है। एलिट लोग भी है और मार्जिनाइज्ड भी लोग रहते हैं गांव में। हमारा जो विलेज स्ट्रक्चर है, जो बहुत से अलग सा रहता है। जो हरिजन लोग हैं उसके ऊपर मेरा जो टाइटल स्टोरी है वर्सल यानी जो हरिजन जो लोग रहते हैं, जो ज़्यादातर ड्रम बजाते हैं और उसका एक टर्न रहता है कि आज पूरे बरस
मैंने ड्रम बजा दिया तो नेक्स्ट ईयर अदर फैमिली विल बीट द ड्रम्स एंड दैट इज एक्चुअली द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर देम फॉर द अर्निंग दे गेट मोस्ट प्रोबेबली द राइस मिलता है उसको, कोकोनट मिलता है, पैसा मिलता है, तो बहुत खुशी होती है उसको ये लोगों के लिए। तो एक्चुअली जिस ऊपर मैंने एक कथा लिखी है और एक मेरी कथा है जो काजुरा बोल के उसके ऊपर एक फिल्म बना है, उसको 67 नेशनल अवार्ड भी मिला है फिल्म का। तो ज़्यादातर उसके घर हम नहीं जाते, उसके घर जाके हम खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, बट एक्चुअली आई एम वेरी मच कनेक्टेड विद देम। I purposefully go them. I go in their house. I eat. I request to give me the tea or maybe खाना मैं मांगता हूँ वहाँ। क्यों करता हूँ मैं कि एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि हम जो राइटर्स है कि जो लास्ट पर्सन जो है जो दुखी है वो जो जिसको वॉइस नहीं है, जो वॉइस जो कभी जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन जो लोग है जो बोलते नहीं एलिट के साथ, गांव में बोलते नहीं, अपना दुख व्यक्त नहीं करते, अभिव्यक्त नहीं करते। मेरा सबसे ज़्यादा सबसे शॉर्ट स्टोरीज दे स्पीक्स अबाउट द marginalized people. I have written a story on a monkey killer, that is Mar MIRABAI. That's Chandrakor, which I got a Katha award from Delhi in 2003. And उसी ऊपर भी एक फिल्म बना है। Actually, I have also written on the Dhangar community, Jani short story, it is one of the short stories in इसमें वर्सल में है। तो बहुत से लोग जो है मार्जिनस लोग जो है जो पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, जिसको कभी उसका ध्यान नहीं गया इसके ऊपर मैं ज़्यादातर मैं लिखता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी ज़्यादातर कथाएं उड़िया में ट्रांसलेट हुई है, मलयालम, कन्नड़, मराठी और कश्मीरी में भी ट्रांसलेट हुई है, अंग्रेजी में है। ज़्यादातर मोर देन 16-17 शॉर्ट स्टोरीज हैं ट्रांसलेटेड इन मलयालम, पोर्चुगीज़ में ट्रांसलेट हुई है। और ये जो मुझे जो अवार्ड्स मिला उसके पहले ही मेरा जो वर्सल शॉर्ट स्टोरी है वो कन्नड़ में ट्रांसलेट हो गया और कोयम्पो पत्रिका ने पब्लिश भी किया है। उसके बाद मैंने एक नावल लिखा है, उसका नाम है पुराण। पुराण मीन्स सिल्ट बेस्ड कल्टिवेशन। सिल्ट बेस्ड कल्टिवेशन क्या होता है कि जो बारिश में जो आता है, जो पत्थर आते हैं और बाद में मिट्टी आती है और में रेती आती है तो सेटल होती है, तो उसका निकाल के हमारे वहाँ खेती बनती थी। 2004 तक वो खेती बनती थी, बाद में गवर्नमेंट ने चेक डैम बांध दिया तो समझ हो गया अभी, तो 2005 से खेती नहीं बनती हो। उसके ऊपर मैंने ये जो नॉवेल हुआ अभी उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट भी हो गया है। तो ये जो नॉवेल में अभी मैंने लिखा है जो पुराण खेती के बारे में बहुत से लोगों ने पढ़ा। ज़्यादातर क्या होता है गोवा में कि वी हैव ऑल्सो द राइटर्स दे राइट इन मराठी ऑल्सो। मेरा तो प्राइमरी एजुकेशन तो मराठी में हो गया है, तो हमारे मराठी में लिखते हैं और कोंकणी में लिखते हैं। जो तो गांव में जो ज़्यादातर लोग हैं मराठी कोंकणी में नहीं पढ़ते हैं, तो दिस इज नॉवेल हैज़ बीन रिट ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा क्यों उसके सेंटिमेंट्स में और उसका जो दुख है ये मैंने उसमें डाला है। तो 2004 से पुराण खेती नहीं बनती, पर इस बरस मैंने आई हैव टेकन अ लीड टू हैव दैट पुराण खेती अगेन। तो मैं मेरा लिटरेचर लेके गांव में जाता हूँ, गांव में जाके डिस्कशन करता हूँ, उसके जो पुराण खेती वाले और जो नॉमैडिक ट्राइब लोग हैं उसके बाद जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेखक ने सिर्फ चार दीवार के बीच में बैठ के लिखना इतना ही काम नहीं है। तो हमारे कोंकणी में बोलते हैं कि हम वी आर द राइटर, वी आर नॉट ओनली राइटर, वी आर द फाइटर्स, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल to get the recognition as a राजभाषा। बहुत मैंने 555 days हमने स्ट्रगल किया है टू गेट रिकॉग्निशन फॉर द कोंकणी लैंग्वेज इन गोवा। बहुत से स्ट्रगल किया है हमने। तो मुझे लगता है कि हमारे भाषा के लिए लिखते हैं। हमारी भाषा आपकी भाषा की तरफ ऊंचा है। हमारी भाषा की साहित्य जो ट्रांसलेशन करके दूसरी भाषा में जाए, ये हम तमन्ना रखते हैं, इसलिए हम लिखते हैं। यानी ज़्यादातर मैं वहाँ आई एम फॉर लास्ट 25 years आई एम ऑर्गेनाइजिंग ट्रैकिंग, जो मैं अंदर परिक्रमा करते हैं हम
हम जो महादेव रिवर के ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज में चल के जाते हैं। और वन ऑफ द माई बुक विच इज महादेव कागजातल्यान कागदार इज रिटन ऑन माई वैली के बारे में लिखा है, फ्लोरल फाउना के बारे में मैंने लिखा है। और मेरा एक कविता संग्रह जिसका आज आमचे आमी, उसके वहाँ भी मैंने जो मार्जिनाइज लोग के दुख है इसी को मैं पोर्ट्रेट किया है। दैट्स वाई मुझे लगता है कि जब आप गोवा में आए, you may please come to my place which is very far from Panjim। आपको मुझे लगता है अलग सा गोवा आपको मैं उसको पहचान करूँगा। दैट्स ऑल। आई एम वेरी थैंकफुल टू साहित्य अकेडमी। इसके पहले भी मुझे बाल साहित्य पुरस्कार मिला है साहित्य अकेडमी का, इगड़ी बिगड़ी तिगड़ी था। एंड अभी मेरा बाल साहित्य का जो पुस्तक है जो हिंदी में और अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ है और साहित्य अकेडमी में पब्लिश कर रही है। Thank you very much. I am Dr. Asutosh Parida, Odia poet. To start with, I congratulate all the Sahitya Academy award winners, esteemed award winners present here, and all the writers, intellectuals, and media persons who are present in the audience. Actually, I have been writing poetry for a pretty long time. And as most of our friends here have told what is their journey in life with poetry, then I should say that as anybody else who write poetry, it starts with an early age, mostly when in the school, and when you read poetry in the school books, and also get a chance of reading eminent poets of a particular language. And then we learn the basics of poetry, the grandeur of the language, and that inspires us and raises a hope and raises a a challenge in a young boy or a young person that whether I can write poetry at all. Because poetry has always appeared to me as something magical and something extraordinary. And I have never thought that someday I can write poetry. So, in spite of my so much of fascination or so much of attraction for poetry, it so happened that I became a student of science, then science and technology. Then I chose a profession of a scientist and worked for a pretty long period as a scientist in one of the laboratory of Council of Scientific and Industrial Research. And I have often thought that maybe I will no more be able to write poetry, or poetry will abandon me permanently. But that has not happened. That is a big surprise for myself. And people have also asked me that how being a scientist you are writing poetry. So I have always thought that they are not contradictory things. They are not mutually opposite. Science and poetry cannot be mutually opposite things, because in science we believe in discovery, in invention, and in poetry also we do the same thing. Only the process is different. But at a certain level of human cognition or human quest, poetry and science, they can unite. They can influence each other. So with that type of understanding, comprehension, I continue to write poetry. Though there have been periods I have not been able to write because of professional pressures and many other reasons. But in course of time in my life, I realized that
poetry is not just a medium of expression for me. It is a part of my existence. It became a whole world for me. And in the world, which is full of scenes, full of happenings, full of words, full of voices, so much possibility in this world to discover human beings, and and all the possibilities the human spirit is putting forward before us. So I have been writing poetry with that spirit, and I have been encouraged when more than 3 decades back, one of my poetry collections that is named Ipsita Krodha, the Cherished Wrath, was awarded by Odisha Sahitya Academy. And after that, I have been quite consistent, rather, to write poetry and bringing out poetry collections in regular intervals. And this award, obviously, after so many years, is another big inspiration for me as a poet. And I never thought that a scientist will ever be rewarded by Sahitya Academy. Anyway, about this book, Aprastut Mrityu, which has been, will be awarded for this by the Sahitya Academy. Aprastut Mrityu, the unprepared death. And I sometimes think, what can be the good English, Hindi, betayar maut, the death which is not prepared, unprepared death. So, what death already, I'm a good friend, poet friend from Manipur and from Punjab, they have also told that how death has come into their poetry. And I have also seen death, we are seeing every day. But how to, I just came to realize at a certain point in my quest for understanding human life, human society, that death, through death, we have a chance to unravel or to open up the cruel realities of our surroundings, of our society. So in this volume, death has come in many hues. It may be death of a common man, or it may be a death of a Mahatma. It may be death of a friend poet of mine. And death comes in several forms and in several guises. And through every of his forms, there is a possibility that we can discover some aspect of reality which maybe we have not done earlier, or the poet has not done earlier. So, incidentally, there is this attempt has been done in this book, Aprastut Mrityu. And here, I realize that in spite of the menacing shadow of death is hanging over all of us, there is a human spirit. There is a spirit to live. There is a struggle for survival. And death, in face of this undaunted human spirit, is unprepared to act. So here I feel, now I have to interpret my own poem, which I should not do, that there is a optimism that man must live, continue to live in this planet, and it has a future. Because sometimes frustrations overcomes us. So this is an attempt to overcome that syndrome and understand life better, understand the human struggle better, and understand myself better. So that is how I have tried to do in my journey as a poet. And thank you very much for listening to me.
మీ అందరికీ నమస్కారం, which means आप सबके लिए नमस्कार. I am Patanjali Shastri from Andhra Pradesh, which is on the other side of the Vindhyas. I don't know how many of you are aware of its existence. We speak Telugu, a very old language with enormous literature, mostly poetry. I was wondering about it. Okay, I audible now. Anyway, and I had nothing very intelligent to say now. My good wishes to all of you, all the awardees, and I heartily thank the Academy for the award, though not necessarily for these chairs. My special good wishes to a lady from Tripura. It is because one of our most famous loud writers was a man called Tripura, a good friend of mine. He loved Kafka very much. So we have been asked to answer a few questions right from the beginning. I shall try to be very brief. I have a PhD in archaeology from the Deccan College, Pune. My PhD was in ancient India. I was a college teacher for a long time and then called it a day and literally wandered into environment. So during the last 35, 36 years, I've been working in the area of conservation. So I am called an environmental activist. I don't know. Probably I'm a campaigner. And then my literary background. You see, it wasn't very difficult for me to become a writer. Actually, it was impossible not to become one, because both parents, mother and father, there are two long lines of literatures, musicians, scholars, dancers, and yatis, sannyasis also. So like duckling to the water, writing came to me quite naturally. And I began writing from my early school days. That was because of my grandfather. And then he was a very famous and he was a polyglot. He was a scholar in several Indian and European languages. He had a profound influence on me. He used to tell me stories from Jataka tales, because at the time he was translating Jataka tales from the original Pali. So he used to tell me some of those stories. I was quite young. And one of my brothers, and actually next to me, he named him Padmapani because of the influence of Buddhism. Anyway, so one day he gave me a very thick notebook and said, "You write whatever comes to my mind, whatever you think interesting." So I finished the book in a week and then filled many more like that. But I tell you, I never wanted to be a writer in my early days. I wanted to be a beady roller, a beady roller. Yeah. It was because a Muslim woman who used to sell kajal to my mother. I don't remember, but vaguely she was
a very fair and very with thickly masquerade eyes. She used to sell kajal periodically to my mother. And her husband was a beady roller. He worked in a factory which was behind my house. So one day I followed her. And she went to the factory to give lunch to her husband. And then I saw him making beadies. It was beautiful. So he picked up a leaf, cut it, took few pinches of tobacco powder, rolled it, and just capped it expertly in one fluid moment. And then I noticed this fellow had a extended, very sharp thumbnail to cap it, each bead, those small little things. And then I decided I should become a very expert beady roller. And that didn't stay long. Then I wanted to be an expert express engine driver. Because whenever we traveled to my mother's place, the train used to take frustratingly long time. So I said I must become a driver for an express train, which never stops anywhere, only to my grandfather's place. So, and then I didn't become either. So I said it was very easy to become a writer, like, any artisanal community. Children become what their fathers did. Not a very good comparison though. And then I have to dwell on what I did in environment. Many of my friends and many readers think I literally wasted a lot of time working in environment because I could have written many more stories and novels if I were not in environment, which is not true. My work in environment related to many things. One is sensitizing people on environmental problems, and then also dealing with violators of environmental law, which took a lot of my time. And then most importantly, my engagement with life became much deeper thanks to my work in environment. Because I worked with farmers, I worked with Adivasis, I worked with the LGBT community for 5 years, and then many others. So that means I became very close to a life that I didn't know in my childhood or in my adulthood. And much more than that, I became aware of a basic flaw in the developmental strategy we have been following for development, you know what I mean. So the deep flaw is the planners never have reckoned with the ecological concerns of this country. So what I mean is, ecology wasn't part of the development strategy we have been following. And why should it be? It's because, environment is generally understood as a concern of, or an elitist concern, protesting anti-establishment things, judicial intervention and things like that. It is partly because the biggest violator of environmental law is always government. But that apart, environment is basically conservation of our resource base.
It's not love for monkeys, squirrels, rivers, and that may be there. But basically, it's conservation of our very resource base, our soil, our biodiversity, everything. So, in the process of this understanding and my own field trips, work, and all that, I became very intensely aware of this. So, I find a certain fulfillment in this work. And many of my stories and a few novels I wrote reflect this understanding in many novels and stories. And the last question was to say something about the award-winning collection of stories. It's called Rameswaram Kakulu. It's an anthology of my stories, published by my good friend Mr. Chaya Mohan, himself a writer. Rameswaram and Kakulu. Rameswaram is, a very famous place in Tamil Nadu, which is very famous, where people go for the last rites. And Kakulu means crows. So it's symbolically related to death. A number of my stories relate to death. It is the understanding and exploration of death. It is also that. And there are also other stories in that. One is about the Freudian concept of unconscious and the interconnectedness among human beings without actually being acquainted, And there are two interesting stories in that volume. One is Rohini. Rohini was and is a river flowing, I think, somewhere in Haryana. Probably some of you know. The story was about the first ever river water dispute in this country. So Buddha, he was alive. The Tathagata himself was requested to adjudicate over this dispute. And interestingly, when he was forcibly brought to the place, on the other side of the river was his own father who was alive. And so he had to do something about this. His own clan, Sakyas. And on this side are Koreas, a Republican community, tribe, I don't want to say tribe. So, and then he was asked to preside over this. I got this from the Buddhist text, Dirgha Nikaya. It's called Dirgha Nikaya. There are two versions of this story. One version says people didn't listen to him. The other said they did. And most of what Buddha spoke on that day in my story were actually culled from this Dirgha Nikaya. He actually, of course, Dirgha Nikaya itself came much later, years after Buddha spoke those, we don't know, but the only verification is the Dirgha Nikaya. So I presume he has actually spoken those words. That is one. And another story was, when Saumitri, Lakshmana, went to forest with his brother, his wife Urmila, yes, I am going to conclude, don't worry. I am myself very comfortable. So his wife Urmila, who was naturally unable to bear the separation, went to sleep for 14 years. Don't worry, it wasn't there in the Ramayana, it was folklore. So she slept for 14 years waiting for this fellow. And there are many different stories about this. I took one. How did she come out of this? So her Sahelis gifted her with a very small little turtle. And then she called her Sita, the turtle. So somehow this turtle, the way of living and the way, had a meaning for life, ability to, manage one's own life. Anyway, that's the story. And lastly, the greatest influence
and my writing has been the folklore of the Adivasis and of course the agrarian communities and our own mythology, the Jataka tales, Panchatantra. So the most esteemed, most talked about, debated magic realism, it has always been there in our own folklore, mythology, much earlier in Egyptian mythology. So don't think magic realism is such a difficult thing to understand. The folklore is all about magic realism. So thank you very much. Thank you very much. Hello, good afternoon. Good afternoon, everybody. I would first of all congratulate all my fellow awardees here present. Namaskar to all of them and also to the invited guests and the media friends. Well, I am from the subject of Sanskrit. People are afraid of this language, but I have in the meantime started writing in lucid Sanskrit. I have a tradition of both Sanskrit and Oriya in my family. My father is the oldest living lyricist of All India Radio Cuttack in Odisha. I am Odia, but I write Sanskrit and live in Bengal. Then my maternal grandfather was a famous Sanskrit poet. He wrote the biggest Champu Mahakavya, Matrimukti Muktavali, which has been published by Odisha Sahitya Academy also. Now my PhD students are doing PhD on that. In that way, from both the sides of my family, I have a background of poetry. And I thought of writing poetry only when there was a district competition. I was a student of BJP High School, Khordha, and our governor of Odisha, the then governor of Odisha, Akbar Ali Khan, came to give me the award. And that inspired me starting writing poetry, and that was my first poetry in the competition itself. But then I started writing, but I have a very bad habit. I never sent any poem to any magazine. Although I have 8 poetry collection in Odia and 2 ministry collection also in Odia, but I have never sent them to any magazine, and yet I am recognized and people love me for that. I spent a lot of time in Pune. I was in Pune University. I did my PhD there. Shastriji's Deccan College was affiliated to that university at that time. 1983 to 90, I was there in Pune. And that time, and that way I had a background of Indian philosophy also. I did my PhD in Nyaya philosophy, and but came back to Odisha to teach in government colleges the classical Sanskrit literature. And after serving in Odisha government for 19 years, I migrated to Bengal. I came to Shantiniketan, the great poetic land of Tagore, and I started teaching for last 16 years. I was teaching. Now I am retired. Last month I retired. I started teaching classical Sanskrit literature in Shantiniketan Vishwabharati Central University, as you know. And but previously I was never writing anything in Sanskrit. When I came there, I started singing my Odia lyrics to my students, but they inspired me to write in Sanskrit. Only because of them, I started writing in Sanskrit. My first poetry collection came in 2018. This is my 5th poetry collection in Sanskrit. Kajjala Surje Ardhadrusya, the half visible damsel in a black sun, you can say. And this is the 5th collection. And fortunately, Academy gave me prize for the 3rd collection, Sunni Meghaganam. Well, I think that they gave it because I employed a new style, implemented a new style in Sanskrit.
I never wrote in stanzas. I always write in blank verses. And in addition to that, I tried to show very fresh metaphors, oxymorons, and all that. Perhaps that attracted our readers. Right from the first book itself, my name was hovering over the air. And but the third book got the prize. I will say that before introducing this book, while there was a discussion about the poetic language and poetry and thought, I have put my hat into it. The very thing is that language is not impermanent. Language is permanent, just as thought is also permanent. If thought is meaning, then it has to be permanent. Patanjali, in his Mahabhasya, he says, Nityah Savdartha Sambandha. So the relationship between both word and meaning is permanent, only because they are permanent. They both are permanent. And not only that, even chirping of words, which we do not understand, it might be having a meaning, that is also permanent. All these words uttered long back, say 1 lakh years back also, they all are stacked in the sky somewhere. Our philosophy says now science approves. Therefore, language is permanent, and its word and its meaning, or the thought, that is also permanent. How poet crosses the barrier of language, which you were saying. That is because poet always tries to cross the tradition. Suppose in Nyaya Darshan it is being said, Asmat Sabdat Ayamartha Bodhabya iti Ishwarecha Sanketah. The meaning imported in a word is the desire of God. We call this as table and that as roof because God has said it. That is a traditional, very classical opinion, but it is Shastric. But what poet does, poet crosses that barrier. So, Ishwarecha Langhana, crossing the desire of God, has a beauty. Otherwise, we will not compare moon with face, a beautiful woman's face. Because here we cross. Moon is never a face, or a face is never a moon. But still we put both of them together. Now, that kind of crossing has a great excellence, and that kind of crossing has a great pleasure. That is why even before Bakrokti Jivitakara, Kuntaka, in Anandavardhana says in Dhunyaloka, accepting the opinion of Purupaksha, Sahridaya Hridayallahadi Sabdartha Mayatvam. Sahridaya Hridayallahadi Sabdartha Mayatvam. Poetry is that which has both word and meaning, that pleases the heart of connoisseurs. That has been there, and this pleasant feeling comes only when poet crosses. The village women, they talk on the bank of a village tank or pond, but those words come to the poet, but he uses them in a different meaning and different context and differently. That is the charm poet creates. And I have, as I have said, that I have some Odia poetry collections and Sanskrit poetry collections. Just for a glimpse, I will say that my 5 Sanskrit poems are, poetry collections are Tava Jabadhara Manmaya Rekhasu, Netra Prante Nispanda Samaya, Sunni Meghaganam, Karuna Kampasatakam. But before that, my first Odia poetry book is Aranyara Swana, 1990, Charipada Bhui, 1994, Parasta Vasanta, 1997, Amartya Andhara, 1998, Chalanti Pratima, 1998, Mahamaghara, 1999, Monosamrajya Praja, 2000, Indradyumna Raga, 2001, and 2 mini-story collections in Odia, Avasa Upatyaka, 1993, Janmandhara Swapna, 2007. When I utter these names, I have one thing to say. The appreciation which I got for my Sanskrit poems are because, first because of my titles. I have, my readers say that you have extraordinary titles. I will just, from the awarded book, Sunni Meghaganam,
Sunya Meghaganam has also many poems and dhwanis, suggestions. I will not go into that, a poet shouldn't do that. But just I will read out some titles of some poems inside that book. Hey Saivala Dagdha Nadi. It is all means understandable to all. Udyana Kupachakre Ratri Jajavari Nasta Kankatika. Kankatika is poem. Taba Nayana Meghanam Upajapena. Upajapo is Chakranta, conspiracy. Ranana Anichukam Swasa Jantram Padachinna Bhakshini Sunya Jhanja Mrita Potasra Ibame Samaya Hridayamiba Bhanguru Basantasya Belah Lekhani Agre Ratri Dirghatara Mukha Vajranadah Kopi Marmaritam Chandrasya Smasanam Priya Sukha Pakhinam Bhrashta Pratharava Kasyapi Sankhasya Jhanjasiktam Ganam Taba Dagdha Pratyayanam Dhumah Ulka Vrusto Vrikshah Swapna Nadya Samudra Bandana Natava Gruham Twambina Champaka Vrikshe Mauna Pakhi. Similarly, Dagdha Amra Manjarinam Palasa Asruni, Dagdha Suvarnasya Maunangarah, Adharo Mrita Patranam Marmaram, Sunya Meghaganam, this is the title poem, Jharitani Patrani Hridaye, Hridaye Tusara Vanam, Bagdagdha, etc. etc. And while coming to writing in Sanskrit, I have one thing to say, that my life, my childhood, long part of my childhood is spent in a village where Gyanapitha Avadi, our Odisha's famous Gyanapitha Avadi, Sachidananda Rautray was living. That was his village. That is Gurujanga. We call it Chotomoro Ganti. He wrote a poem on after that village itself. I lived in that village. I collected all his influences and all his words and literature there. In my childhood, means before 10th standard. And that has a great impact besides my father and all the postmodern poets in Odia, including my senior friend Asutosh Paridaji. I recognize him as a great poet only because his awarded book, Aprastuta Mrityu, was stolen from me in a meeting. Then only I recognized him. He must be a great poet because his book is stolen from me. And because nowadays people say that poetry is very boring. If you want to ward off people from the meeting, start reading out poetry. But his poetry book was stolen from me, so he is a great poet. Anyway, I am influenced by many postmodern poets in Odia, including Asutosh Ji. And besides that, when I came to Santiniketan, you know, Santiniketan soil is drenched with Tagore's lyric. And I felt it is an area of 1200 acres, full of dense forest and departments. I strolled and strolled throughout the university, and taking me inside one thing, what should be the topic of my poetry writing in Sanskrit, because I am going to write. I thought what Tagore has not written and what he should have written had I been alive now. I thought that in the postmodern era of simulacrum, where we are bombarded by events and media information, and our individualism is being crunched in our standardized life, full of targets and many other things. Inside that, in which condition human relationship stage. So I thought that I should write on human relationship in a postmodern precarious era. And all my 4 books in Sanskrit are on that theme. And of course, one Corona Kampa Satakam, I have written the devastating effect of Corona on Indian society. On that, I have a Sataka, postmodern Sataka Kavya. And this is the reason I targeted Rabindranath's poetry after reading him and what he would have written. Thinking that in mind, I started my writing in Sanskrit. Thank you very much. Thank you all. Very good afternoon to all of you. I am Dr. Vinod Asudani, a Sindhi poet and writer. But I am not confined to Sindhi. I write in 3 languages: Sindhi, my mother tongue; Hindi, national language;
and English global language. Till date, 19 books to my credit in all the 3 languages, and I have translated 18 Sindhi books into English. By passion, I am a poet. By profession, I am professor of English. And then I indulge in lot many things. I'm a psychologist, counselor, social activist, thinker, and philosopher. The first question I will answer, why I write poetry? Because I can do many things, but the best thing that I think I can do is writing poetry. If I would have been paid more for poetry, I would have quit my job long before. That's why I write poetry. I would not have done anything in the world except writing poetry. But unfortunately, poets are poorly paid in this world. Now, if I look at my creative process and journey, 3 important factors shape that. Number 1, I am a poet of the post-modern era. I'll come to that. Second, I am a Sindhi poet. Sindhi literature occupies a very peculiar and fractured psyche in the modern time. I'll come to that. And thirdly, I am visually challenged poet. And that has imparted a different kind of aesthetics and content to my writings. Because I'm visually challenged since birth. I have not seen this so-called beautiful and colorful world. I will come to that. Now, the book on which I have got this Sahitya Academy Award is called Hath Pakad Ja, Haath Pakadna, or Lend Me Thy Hand. Now you just concentrate on my life. Being a blind, I need to be escorted. My friends, my family members, my parents, my wife, my children, even the strangers on the road, they have to hold my hand, and only then I can negotiate the complex paths of this life. So Lend Me Thy Hand, the title of this book, is the central metaphor of my life. If I want to write autobiography, I can sum up in the single word, lend me thy hand. And this lend me thy hand, in a poetic sense, takes various shades, various colors, various paradigms. In one of the couplets of the title Ghazal, and I'll tell you, this lend my hand, it is the collection of ghazals. I write metered poetry. I am not fond of free verse at all, because that comes very much to close to the prose. So I write in, जिसको बोलते हैं ना, बहर वजन में गजल लिखी जाती है, और उसी में मैं लिखता हूँ. और ये जो हाथ पकड़ना, ये जो शीर्षक है, उसके 2-3 एक रफ ट्रांसलेशन में आपको बताऊं कि जाता हूं मैं खुदा के पास मगर याद रखना, जाता हूं मैं खुदा के पास मगर याद रखना, कभी खाली हाथ लौटूं हाथ पकड़ना. अगर आधी रात को सितारों की महफिल से, अगर आधी रात सितारों की महफिल से कभी गमगीन लौट आऊं हाथ पकड़ना. कभी दिल से कभी जहन से काम लिया है, कभी दिल से कभी जहन से काम लिया है, गर इन दोनों की ना सुनूं हाथ पकड़ना. कभी बेवजह ही रोऊं, कभी बेवजह ही रोऊं हाथ पकड़ना, किसी दिन खुद से डरूं हाथ पकड़ना. What I'm trying to say, that it is not simply I who is a blind person requires somebody's support and the cooperation. Tell me, is there anybody who does not want the support of somebody's hand? Now, hand emerges a metaphor. Support in anything. Support of the government, support of the family, support of the friend, support of the stranger, support of the knowledge, support of the experience, support of the passion, support of the profession. So this lend me thy hand emerges as a very complex and a universal metaphor where each one of us is able to relate and correlate. My ghazals are not in the, they are not the traditional ghazals that express love and longing for the beloved. They are not the desire of love and affection. They are not the admiration of the black hair and the white cheeks and the red lips. मेरी गजलें वफा बेवफा प्यार मोहब्बत गुल परवाना इनकी बात नहीं करती है, साकी मैखाने की बात नहीं करती है. मेरी गजलें जिंदगी के भीतर छुपे हुए कंट्राडिक्शंस, विसंगतियों, आयरनीज,
पैराडॉक्सेस और उस सटल डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस को सामने लाती हैं, they have been eternal. Let me state very emphatically that human race, right from its beginning, if we have consistently followed some value, take it, that is the value of discrimination and injustice. It is operating at the subtle level. Sometimes it is visible, sometimes not. Because being a visually challenged boy, child, student, when I grew up in this society, you know, I could feel persistently and intensely how the injustice and the discrimination operates at the various levels and which is not even the noticed. And therefore, when I tell you that my poetry is the output of the postmodern sensibility, I'm not speaking in a simple traditional way. Postmodern sensibility, I believe, it is the fractured mandate. It is the fragmentary existence. It is the aesthetics of ambiguity. At one and the same time, you are happy, unhappy, melancholic, excited, blissful, and fractured. And this complexity of the emotion, when I capture in metered poetry, it becomes ghazal. And then I tell you that there are three domains of the existence. One is a personal life, me and my surrounding, my people with whom I am personally connected. Another is socio-cultural system, the politics, the society, the culture, the economic system. And the third is cosmic system, where the divine and the devilish forces are there. Now, my poetry is a critical examination of the three domains of the existence. Let me repeat: personal domain, socio-political domain, and the cosmic domain. Now, as a poet, being a sensible and a sensitive poet, whenever I find some crack, some inconsistency, some irony in any of these three domains, there my poetry comes into being. And it is a continuous confrontation with the desire to repair these three systems. Although that is not explicitly stated, but to give a message is not the job of the poet. But at the same time, my ghazals are not the romantic expressions of sentimentality, but they are the intellectual expressions, but so aesthetically refined that it becomes a poetry. In Sindhi ghazal, there is a particular tradition which was nurtured by my senior teacher poets, Arjan Hasit, Vasdev Mohi, both Sahitya Akademi awarded writers. So we have taken the ghazal out of the sentimentality, basking in the sentimentally, and we have established it as an intellectual expression, but so refined, as I said, by the aesthetics and the art, that you will, until unless you do not make efforts, you will not understand that there is some profound thought expressed in the couplets of the ghazal. For example, when I define the struggle of anyone, in my struggle, because being a visually challenged poet, I had to put 10 times more efforts to achieve anything. Simply, if I want to go out of this hall, somebody has to escort me, somebody has to lend her hand to me. So therefore, I have to work hard. So I have portrayed it in my ghazal like this: हर लम्हे का कत्ल किया है, हर लम्हे का कत्ल किया है, तब जाकर इतिहास रचा है, तब जाकर इतिहास रचा। कोई इतिहास ऐसा नहीं रच जाता है जब वो स्ट्रगल होता है, लेकिन उसको पोइटिकली एक्सप्रेस करना, that is the job of the poet. That's what I try to do. Now the second point that I am a Sindhi poet, and the Sindhi literature occupies a very peculiar situation, because you know that at the time of the partition of India, when we got independence, 1947, lakhs of Hindu Sindhis were driven out of Pakistan because we were Hindus, but we spoke Sindhi language. And here, unfortunately, we did not get any state. So we got scattered in North India and the Central India. We do not have any state, and therefore we do not have any political patronage to my language. And unfortunately, because there are the demands of earning livelihood in the schools and colleges, this language has disappeared. It is disappearing from the even the families, right? So we have the challenge that people don't speak this language, and it is no support, no financial, no political support as such. And so it is passing through a crisis. Now, forget about those matters. As a poet, what impact this partition has upon me? Imagine, we all were fighting for the independence, and the moment we got independence on 15th of August 1947,
all of a sudden I am said, okay, give up your home, give up your land, give up your culture and ancestral land. And immediately on the Independence Day, I became exiled from my Sindh, from my land. And you know, literature, language and culture, they are rooted in the soil. If they are taken away, then they become uprooted. So my literature is uprooted literature from its ancestral land. And this profound psychological sense of uprootedness continuously haunts me. It continuously haunts me. I cannot tell myself be happy on 15th August. The moment I try to be happy, the centuries of agony come upon my head and heart and tell me that where is that independence that binds you with your land. The moment I try to be melancholic, the moment I try to be sorrowful, the entire land of India tells me be happy because you are living in a free and independent nation. I do not know whether to be happy or sorrowful, to be very frank. So that is continuously torture. And my soul, my poetic genius is continuously being tortured between happiness and sorrow, between something that I have got and something that I have lost at the symbolic level, not as an individual, but poet is expanded into the universal sensibility. And that universality sensibility of the Sindhi literature is expressed in my poetry at many places. For example, I'll tell you one couplet. खोड़ आहिन हित नदियों पर सिंधुओं में को सावथम पैंजी सिंधु पैंजी मिटिया जी गाल का। बहुत है यहाँ नदियां लेकिन फिर भी तू सिंधु की बात कर, अपनी सिंधु अपनी सिंध अपनी मिट्टी की बात कर। Now this is a very peculiar thing to Sindhi poetry, which is hardly found in any other, because we do not have any anchor. We are the ship which is simply wandering on the rough ocean in the hope of discovering someday some piece of land, some anchor, some roots. We cannot forget the roots. Jews came to Israel and they discovered their roots and became a great nation. But we diasporic Sindhis were driven out from our land, from the civilization of Mohenjo-daro, said that Mohenjo-daro continues to bleed, continues to feel agony in my poetry. Now the last point, I am a visually challenged poet. Now being a visually challenged person, when you look at the life and the world, it makes a difference. Because you know, much of the knowledge, it comes through your visual symbols, right? As we say, we live in the visual era. Visual images come to us and that is the source of knowledge. I have not seen the moon. I have not seen the stars. I have not seen the faces of my mother and father. I have not seen the beauty of my wife. I have not seen the charming faces of my children. I have not seen the blossoming of the flowers. I have not seen the floating of the clouds. Then how can I write poetry? Where does the aesthetics come from? Otherwise, if you read anybody's poetry, take it from me, anybody's poetry, visual descriptions of nature, visual descriptions of beauty of woman are abundant in any poetry. And that is, we believe, aesthetics comes from. I, with a great honor to the visual sense, differ. Aesthetics, which is confined only to the visual impressions, is incomplete aesthetics. The true aesthetics has to come from the blissful experiences that come to us from all the five senses. I may be denied, I may be deprived of the blissful experience of the sight, but the world comes to me, the world becomes alive, my experiences become alive through the sense of touch, through the sense of hearing. When I fell in love with my wife, it's a love marriage. Let me tell you the secret. She's here. It is not the beauty that I looked at her. It is the sense of touch, the way she guided me, the way she read out the books for me, the way she lent her eyes to me when she used to read the books for me. That was the moment of falling in love. Because बहुत सारे बड़े किसी शायर ने कहा, मैं नाम नहीं बोलूंगा, कि मोहब्बत तो वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है. आपने सुना होगा, वो एक नज्म है. लेकिन हम कहते हैं कि मोहब्बत को निगाहों से नहीं बयां होती, ये वो हकीकत है जो निगाहों से नहीं बयां होती है. Because
If you ask 100 people how your love story started, they will say, okay, I looked at her and fell in love. I did not look at her, but I fell in love because of her temperament, because of her affection. That makes a difference. And therefore, I want to establish a theoretical approach that is called disability aesthetics in literature or disability discourse in literature, where we need to, it's not, I will not dwell upon here in too much, but every piece of literature can be interpreted and understood from disability perspective. I'm developing that theory, and very soon the theory will be before you, right? And just I tell you how disability in the Gateway Literary Fest at Mumbai, I spoke at length about this disability aesthetics in literature, and in my ghazals you will find it in abundance. For example, आप सोच लीजिए कोई एक साधारण राइटर है जो जुदाई के समय अपनी प्रेमिका को जुदा होते समय एक शेर लिख रहा है. वो क्या लिखेगा? जाते जाते तुम्हारी आंसुओं भरी आंखें मेरे नजरों में उतर गई, है ना? जाते जाते तुम्हारा उदास सा चेहरा आज भी मंडरा रहा है मेरे शामों में, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? मैं क्या लिखूंगा? अलविदा कह के उसने छुआ था मेरे हाथों को, अलविदा कह के उसने छुआ था मेरे हाथों को, अभी तक है उंगलियों में स्पर्श का एहसास शेष. Here I depart and profoundly depart from the visual paradigms and establish aesthetics, evoking the other senses. We have all of us are gifted with ears and touch, but we have conveniently neglected it in life as well as in literature. I want to restore the dignity of other senses, the aesthetics of other senses. In one of my popular ghazals, because here I challenge even the cosmic order. मैंने बताया था 3 डोमेन्स हैं, पर्सनल, सोशल, कल्चरल और कॉस्मिक डोमेन. कॉस्मिक डोमेन एक बाइबल का सेंटेंस चालू होता है, God said there let there be a light and there was a light. We believe that this is the beginning of the universe. लेकिन I ask you a question in my couplet. मैं अपने शेर में, अपने गजल के एक शेर में पूछता हूं, is the light fundamental or is the darkness fundamental? See, light can be visible only when there is a background of darkness. Darkness is eternal, not the light is eternal. Take it from me. दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी. दिखाई दे न दे, not necessarily कि रोशनी हमेशा दिखाई दे, नहीं. I'm different, मैं एक different आपको पैराडिम बता रहा हूं. दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी. Darkness is not simply the absence of light. Darkness has got its own separate existence. Rather, the light is dependent upon darkness, not the vice versa. Not the vice versa. And therefore, let us deconstruct our paradigms and reconstruct it on the proper lines. So it is a long discussion. So I believe, thank you very much for giving me this wonderful opportunity, please. Time I have to congratulate. Thank you. Thank you. Oh, thank you very much. Hello, Vinod. Arey, Mohanji. Sir, I request our esteemed writers to stick to 5 minutes because we have to come back again for the reception and after. No. We cannot make injustice because. Please stick to 5 minutes and please. मैं कृष्णाथ खोत, मराठी राइटर. मैं सिर पर इंगान इस उपन्यास को बारे में बताओ. इधर उधर भटकने का इरादा नहीं है मेरा. मैं सिर पर टिप्पण जो लिखा है वो पढ़ना चाहता हूँ. एक दिन मैं अपना काम करके इस जंगल में गया. उस जंगल में मैं अक्सर रास्ते में लावारी चरती भैंस देखता था. मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. मैंने माना था कि बांध के नीचे वाले गांव के लोग चराने लगते होंगे, लेकिन ग्रामीण अपने पशुओं को इतने गहरे जंगल में नहीं छोड़ेंगे. उस दिन मैंने दूर तक वैसे ही भैंस देखी जैसे हमेशा देखता आया हूं. वह एक साथ झुंड में घूम रही थी, पीछे मुड़कर मुझे घूर भी रही थी. मैं पालतू भैंस मुझे इस तरह क्यों देख रही है?
मन में सवाल खटका। वो बहस मेरे साथ आए लोगों की गतिविधियों पर नजर गड़ाई थी। उनके शरीर के बाल काफी बड़े थे, पास जाने से डर लगता था। उनकी नजर हम पर से हट नहीं रही थी। वे हमें इस तरह क्यों देख रही है, ये कहाँ रहती है, क्या उन्हें दूसरे जानवरों से डर नहीं लगता? कितने सारे सवाल, क्या उन्हें दूसरे जानवर से डर नहीं लगता? ऐसे कई सवाल के साथ मैं उसे बूढ़े आदमी से मिला। उसने कहा, यह बहस अभी ऊपर स्थिति गांव की है, जो गांव अभी अस्तित्व में नहीं है। पता नहीं किस किस गांव की ये है या एक ही गांव की है, लेकिन जब वे मनुष्य नामक जाति को देखती तो वे घबराती है और एक जैसी दिखती ही रहती है। मनुष्य की छाया से डरती है और अब वे वैसा व्यवहार नहीं करती जिससे कोई मनुष्य पास जाने का साहस करे। विस्थापन के समय ये लोग टाट पशुओं को यही छोड़कर नए इलाके में चले गए। वही टाट भैंस अब दुधारू हो गई है, लेकिन अब वे जंगली जानवरों में तब्दील हो गई है। किसी को अपने आसपास भटकने भी नहीं देती। बूढ़े आदमी की ये बात और जानवरों को व्यवहार कई दिनों तक मेरे दिमाग में गूंजता रहा। मुझे लगता है कि मेरे लेखकीय मन में यही बीज बोया गया। पालतू जानवर की यह उल्टी यात्रा मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगने लगी और आगे मैंने एक कथा भी लिखी। कथा लिखने से बाद मैं एक कथा से एक और सोचने लगा कि यह कथा के बीज है, लेकिन मेरे और आलोचक जो है, आलोचक ने मैंने बताया कि प्राणी विकास करते समय 4 कदम आगे बढ़ा है, लेकिन यदि 2 कदम पीछे हटना भी जरूरी हो तो यह भी संभव हो। वह सुविधा प्रकृति ने उसने प्रदान की है। ऐसा करते हुए प्रकृति ने जो रास्ता खोजा है वो वाकई अजीब है। ये जंगली बिल्लियों पर उनका शोध था। उन्होंने उस संदर्भ से मेरा ये उपन्यास वो 10-12 साल पहले बांध बनते समय कुछ गांव को विस्थापित होना पड़ा। ग्रामीणों ने ठाट भैंसों को गांव छोड़ते समय वही छोड़ दिया और वे अपनी मंजिल चले। जब वे कुछ वर्षों के बाद उन्हें पुनः वापिस लाने गए तो उन्होंने देखा कि भैंस अब पालतू नहीं हो रही, वे जंगली भैंस बनी थी। सर आपसे अनुरोध कि जो हमारे वक्ता है, अभी कई वक्ता बाकी हैं, संक्षेप में 2 से 3 मिनट में बोले सर। वो 15 या 20 मिनट इसलिए मैंने शुरू में ही अनुरोध किया था आप सभी से। आप सब इतने वरिष्ठ हैं, मेरा अनुरोध करना आप 2 मिनट हो गए। जब वे कुछ वर्षों के बाद उन्हें पुनः वापिस लाने गए तो उन्होंने देखा कि भैंस अब पालतू नहीं रही, वे जंगली भैंस बनी थी। वे एक गोल अखाड़ा बनकर अपने बछड़ों की रक्षा करने और जंगली कुत्तों जैसी जंगली जानवरों पर हमला करने पर उन्हें अपने सौंगों के भागने की माहिर थी। क्या वे पालतू जानवर से 2 कदम पीछे हटकर फिर से जंगली जीवन जीने के लिए तैयार थी? इसे पढ़कर मैं उत्साहित हो गया और मैं इस कहानी को उपन्यास में बदलने में सोच गया। यह उपन्यास है, लेकिन मैंने समझा कि विस्थापन का ही उपन्यास है। विस्थापन इस समय का सटीक सर्वश्रेष्ठ रूपक है। हिंदी कवि आलोचक विजय कुमार की यह मान्यता रही जिससे हम गुजर रहे हैं। वास्तव में वे कहते हैं मनुष्य अतीत की जड़ों, परंपराओं, परिवेश, भाषा, संस्कृति, रिश्ते, नातेदारी, गली मोहल्ले और शहर से विस्थापन हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि उसकी स्मृति से भी उसका विस्थापन जारी है। हमारे समकाल में है ये हर असाधारण कलाकृति में लेखक मुख्यतः एक शरणार्थी है। वह ठोर ठोर भटकता शरणार्थी है जो जीवन मूल्य और अगणित मान्यताओं को अपने कंधों पर अपने बक्सों सामानों के साथ आबाद रूप से कई गलियों शहरों में ढो रहा है। ये सारी बातें एक जीवित और धड़कते इंसान के रूप में उसने अभिव्यक्त की है। चारों तरफ असत्य, विकृतियां और विनाश की स्थिति में वह अपना सामान बचाने की कोशिश में है। यहाँ के शक्ति केंद्रों की प्रचार तकनीक इतनी भयावह है कि वह गायब होने वाली हर चीज को
आसान प्रक्रिया में तब्दील कर रही है। हर बुनियादी संकट हमारे लिए महज का एक यथार्थ बन जाता है। हम सब कुछ भूलने के लिए अभिशप्त है। ऐसे मामलों में अगर कोई कलाकृति हमारे किसी सामान खोई हुई चीज की ओर इशारा करती है तो वह अनुभव बिजली के झटके की तरह से होता है और व्यक्ति को एहसास होता है कि इस दुनिया की पूर्णता की तस्वीर अब तक कितनी झूठी और विश्वासघात की रही है। कला का एक सामान्य काम है हमें ढहते खंडहरों से सच्चाई का नवसृजन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसके संदर्भ में मुझे हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि कैसे मैं कहीं न कहीं से विस्थापित होता रहा हूँ। हम इस दुनिया को अपने तरीके से बनना चाहते हैं। यह जागृति इच्छा हमारे जीवन की एक मौलिक और अनोखी चीज है। और वे कहते हैं मैं बाहर निकलना चाहता हूँ और अपने भूले घर वापस जाना चाहता हूँ। रिंगान उपन्यास में देवाप्पा और बैस इसी बात को रेखांकित करती है। यह मेरा उपन्यास है। ये उपन्यास को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। मेरे कई उपन्यास है, गावठाण है, रौंदाला है, झड़झिंबड़ है, धूलमाती है। ये उपन्यास के बाद मैं ये उपन्यास लिखा है। रिंगान एक विस्थापित जीवनों की कहानी है। विस्थापित यानी पुनर्वसित जो अभयारण्यग्रस्त या धरणग्रस्त जो लोग हैं उसके विस्थापित की कहानी ही रिंगान की एक कहानी है। थैंक यू। सभी अवार्ड विनर्स को हम धन्यवाद देते हैं और अभी हम कुछ बात बोलने के लिए कोशिश करते हूँ। मैं संताली के हूँ। संताली साहित्य जुबा बहा शॉर्ट स्टोरी में मेरे को साहित्य अकादमी मिला है। तो मैं बहुत छोटा से लेकिन जैसे बोलता है स्कूल जीवन से लिख रहा हूँ और अभी तक लिखता हूँ। अभी तक 31 बुक्स पब्लिश हुआ है और जो जुबा बहा जो कहानी होती है उसमें आर्थ सामाजिक को प्रेजेंट सोसाइटी का बहुत सा विवरण हुआ है। तो हम सभी को हार्दिक अभिनंदन देकर मेरा वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गजय सिंह राजपुरोहित सबसे पहले आप सभी विद्वानों को साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए बधाई देना चाह रहा हूँ। राजस्थानी भाषा में मुझे पुरस्कार मिला है। वर्तमान में मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में राजस्थानी विभाग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। आप सब लोग देखो कि लाडला 2 साल पहले कोरोना काल जो है एक बहुत ही दुखद काल है, लेकिन इन काल के दरमियान कई चीजें आपने सुखद भी मिले। तो उन समय हमारे दिमाग में एक बात आई कि मारो पहलो काव्य संग्रह सन 2006 में आयो। आज तक हमारी 10 मौलिक रचनाएं प्रकाशित है और 15 किताबारों में संपादन कर चुको। तो उन समय हमारे दिमाग में एक विचार आया कि आखिर आदमी ने देखे तो इन संसार में वह कई चीज है जो को शाश्वत सत्य है और वीर अलावा कहीं नहीं है। तो एक चीज हमारे दिमाग में है कि इन संसार में केवल और केवल एक एड़ी चीज है जिन्हें आप प्रेम कहवा, लव कहवा या प्रीत कहवा, और वो एक सनातन सत्य है। तो मैं प्रेमरी रचनावा लिखण सारू राजस्थानी साहित्य में मध्यकाल की जो प्रेम कथा है, प्रेमी और प्रेमिका नायिका है राजस्थान और गुजरात और कचरा क्षेत्र में, ढोला मारू है, जेठवा उजड़ी है, मूमल महिंद्रा है। तो उन तरेरी में पहली बार जो को राजस्थानी साहित्य में प्रबंध काव्य के रूप में प्रेम रचनावा लिखी। और इन लिखण री जो को मैंने प्रेरणा है वे माने राजस्थानी साहित्य में
एक बहुत बड़ा कवि है प्रोफेसर अर्जुन देव जी चारण साहब, तो वारी रचनाओं से मैं प्रभावित हुए, वे सारी में लिखी। और इन प्रेम तत्व जी का बार विनोद जी भाई साहब बात बताई ही, मैं यह मानूं कि प्रेम इंसान में, हर एक इंसान में वे, लेकिन प्रेम पावन रे वास्ते, प्रेम ने प्राप्त करण सारू आप आपरा प्रेमी रे सामी सब कुछ हार जाओ, वो आपने जिंदगी भर नहीं हारण देवे। अगर प्रेम में आप चाहो कि मैं अगला आदमी ने जीत लूं, संभव नहीं है। आप खुद अगला रे सामी हार जाओ, वो आपने जिंदगी भर कटे नहीं हारण देवेला। एक प्रेमाख्यान है भारमली रो, राजा मालदेव जी जैसलमेर में राजकुमारी से शादी करने जावे, उमा देव राजकुमारी है, और सुहाग रात रे दिन वणी एक दासी है भारमली, विंड्रे सागे राजा रो प्रेम प्रसंग चाल जावे। सुबह वापस रवाना वे तो वह जकी राजकुमारी है उमा दे मना कर दे कि नहीं, जो को राजा मारू प्रेम ही नहीं करे, मैं वीरे साथ क्यों जाऊं। तो राजा वीर दासी ने लेन आपरे आ जावे, और जिरे रात सुहाग रात में सुहागली जिरे साथे फेरा लेवे, वह भारमली वह बटे रुक जावे राजकुमारी। वह राजकुमारी जिंदगी भर मालदेव रे साथे आपरे मंदरा रिश्ता राखे, और 20 साल बाद एक युद्ध में मालदेव रो निधन हो जावे, तो वह उंडे लारे आपरो सर्वस्व समर्पित कर, आपरो सर्वस्व त्याग कर और सती हुए। तो उन राजा सारू में लिखियो तो कि राजा जी राज करणो सोरो, राजा जी राज करणो सोरो पण घर बसाणो दोरो। राजा जी राज करणो सोरो पण घर बसाणो सोरो, घर बसावण सारू भुजबल री ताकत सु युद्ध जीत सको थे, पण घर बसावण सारू परणेतर री प्रीत जीतनी चाहिए। थे एकर सामी एक थे एकर उंडरे सामी हार जाता तो बात थाने जीवन भर नहीं हारण देती। लेकिन आदमी रो अहंकार है कि मैं एक महिला रे सामी आपरो प्रेम की कर हारूं, लेकिन वो आपरी मूर्खता में आ बात माने, क्योंकि प्रेम शब्द जो को है वो असल में जीत में नहीं हार में ही संपूर्ण है। इन इस बात में लेन में राजस्थानी 11 प्रेमाख्यान इन काव्य में लिखा, और एक तरह में अपना आप एक सौभाग्य मानो कि साहित्य अकेडमी वो अवार्ड आप सब लोगों साथे मने भी मिल जाला, तो निश्चित रूप में मारो एक सौभाग्य है कि मारी इन प्रेम कथावां ने, प्रेम कवितावां ने जो को महत्व दीजियो ज्यादा, क्योंकि बार बार ये सारा वेरिया है। आप सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी, आप सब ने एक फेरू बधाई। और एक में मारे 1 मिनट में मारे मनरी पीढ़ जो है वह मीडिया रे मार्फत आप मैं पूरा पुगाने चाहूं। इन साहित्य अकेडमी में 2 भाषावां एडी है, एक अंग्रेजी और दूसरी हिंदी, दूसरी राजस्थानी, जिनने संवैधानिक मान्यता नहीं है। लेकिन राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता रो आंदोलन लाड़ला देश की आजादी सु पहली लाल 76 वर्षा सु चाल रही है। तो मैं मीडिया रे मार्फत आके चाहूं कि राजस्थानी वह भाषा है जिसमें नेपाल और अमेरिका देश में मान्यता है। ये बहुत बड़ो विशाल साहित्य भंडार है। यदि जो भाषाई दृष्टि जितना भी वे भाषाई तत्व सब मौजूद है, फिर भी मारे प्रदेश रे राजनीतिक राजनेता वाली उदासीनता री वजह से आज तक मारी माइड भाषा संवैधानिक मान्यता ने तरस रही है। तो मैं आप लोगों रे मार्फत, साहित्य अकेडमी रे मार्फत, सत्ता में बैठा हुआ राजनेताओं तक मारी बात पुगानी चाहूं कि मारी माइड भाषा राजस्थानी ने आप बेगी सु बेगी संवैधानिक मान्यता दो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां देखेला कि ये जो को प्रांतीय भाषावां है, जो को प्रदेश की मातृभाषावां है, वे धीरे धीरे खत्म हो जावेला। एक बार फेरू आप सगला ने बधाई। जय राजस्थान, जय राजस्थान। छोड़ देंगे। कल मैं बोलूँ हेलो,
ये आगत विद्वान मित्रों, साहित्यकारों, बहुत सारी चीज़ें यहाँ थोड़ी अस्पष्ट हैं मेरे लिए, और मैं थोड़ा विलम्ब से आया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपने को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचने समझने की बूझने की कोशिश की, बोध के स्तर पर बहुत सारी चीज़ें आईं। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हिंदी साहित्यकार हूँ और मेरा अपना जो क्षेत्र है वो कथा साहित्य है। मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी रहा, लेकिन साहित्य की जो आंतरिक समृद्धि है उसने मुझे आकर्षित कर लिया। कई कई भाषाओं का श्रवण मनन और सानिध्य, उससे हुआ क्या कि मैंने देखा कि हमारा भारतवर्ष का जो साहित्य है, लोक साहित्य है, लोक साहित्य से लेकर उत्तुंग जो शिखर पर संस्कृत अभी तक बैठी हुई है, वहाँ तक का जितना समझ पाया, मैंने देखा कि बहुत ही समृद्ध है। इतना समृद्ध है कि बहुत सारी ऐसी जो नोबेल प्राइज़ पाने वाली जो कृतियाँ हैं वे उसके पासंग भी नहीं हैं। लेकिन क्या मुश्किल है कि हम अंग्रेजी के ओर हमेशा ताकते हैं, जैसे उसके बिना ताके हमारा उद्धार नहीं होगा, जबकि हमारी अपनी जो विरासत है उसको कभी हमने सुना नहीं, देखा नहीं, मुड़कर ताका नहीं। तो क्या हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं? क्या हमारी यह आत्महंता प्रवृत्ति हमें माफ करेगी? पीढ़ियां माफ करेंगी हमें? शायद नहीं। मैंने जितना समझा उससे एक हीन भावना उस समय व्यक्त हुई, और जब मैंने आज अपने तमाम विद्वान मित्रों को, अभी बहुत सारी बातें तो नहीं हो पाई हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पाया हूँ मैं, लेकिन जितना मैंने देखा कि क्या अपूर्व है। सिंधी साहित्य के जो दिग्गज हैं कहाँ गए वो? मैं उनसे एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया कि वो आँखों के बारे में क्या कह रहे थे। क्या वो नेत्रहीन है जी? तो ये मेरे लिए बहुत ही अपूर्व है, क्योंकि मैं नेत्रहीनों पर बहुत शिद्दत से काम कर रहा था कि आखिर जिनकी आंखें हैं उनकी तो आंखें हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं वे उन चीज़ों को कैसे महसूसते हैं। ये कितनी ऊंची चीज़ है। स्पर्श चिकित्सा, स्पर्श ये वो दुनिया भर की बातें हमने सुनी, लेकिन स्पर्श से वो चीज़ें आती हैं और इतनी दूर तक जाती हैं। ये उनकी महानता है कि उन्होंने गज़ल और बातें जो कहीं उन्होंने, वो हिंदी और उर्दू के माध्यम से कहीं, लेकिन उनकी आंखें अगर नहीं हैं तो वे कैसे उतनी दूर तक जाते हैं? ये मेरे लिए एक अबूझ पहेली थी। आज यहाँ इस सभागार में उनका सुन करके मुझे लगा कि ये चीज़ जो मैं ढूंढ रहा था कितने दिनों से, उसका कुछ उसकी खुशबू जो है वो यहाँ मिलने लगी। जिंदगी लाजवाब चीज़ है, जिंदगी लाजवाब चीज़ है। और वो महोदय मैं नाम है भूल गया जी, विनोद आसुदानी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। मेरे रास्ते में आते हुए 2 स्टूडेंट्स, ब्लाइंड स्टूडेंट्स मिले और उन्होंने कहा कि सर मैं अभी चलूँगा। मैंने कहा बिल्कुल आइए ना। तो मैं संकोच कर रहा था कि उनको क्या मैं कहूँगा, हाउ शुड आई इंट्रोड्यूस
दोज पीपल। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं चलूँगा, मैं समझूंगा चीज़ों को, हो सकता है मेरे अंदर कोई खामी हो। लेकिन यहाँ आकर देखा कि नहीं, आप अगर भीतर से ठान लें तो जो आपकी अपर्याप्तता है, इनकम्पिटेंसी है, उसको लेकर के भी आप जी सकते हैं, सर ऊंचा करके जी सकते हैं, और कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें गढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, इस दुनिया को समझा सकते हैं, जो कि औरों के लिए एक उदाहरण हो। हमको लगता है कि जिस साहित्य की हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग जो दिग्गज साहित्यकार रहे हैं, रविंद्र, कालिदास या और जो दूसरी भाषाओं के लोग हैं, तो वो उनसे जो है उनसे वो प्रेरणा, उन्होंने उन चीज़ों को छुआ नहीं जिन चीज़ों को इन्होंने, विनोद जी ने जो छुआ। विनोद जी का और अन्य विद्वानों का मैं बिल्कुल प्रणाम करता हूँ। मैं उपकृत हूँ इस सभागार में विनोद जी जैसे जीनियस को ले आने के लिए, और उनके जैसे और जो अन्य जो प्रतिभाएं हैं जो अभी तक जो सामने नहीं आई हैं, वो आएंगी और ये दिखाएंगी कि हमारा साहित्य हमारी तमाम खामियों के बावजूद कितना समृद्ध है, और हम अपने हैंडीकैप्ड जो ये है हमारी बौद्धिकता और तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसके बावजूद हम कितने आगे बढ़े हुए हैं। और ये कैसे साहित्य ये बच्चों में कैसे जाएगा, ये एक विद्वानों को सोचना चाहिए। ये भाषाई आदान प्रदान जैसे एक भाषा से दूसरी भाषा में होता है, तो भाषिक के अलावा जो अभाषिक, जहाँ की आँखों की जो ये होती है, आँखों का अप्रोच नहीं होता है, विदाउट द अप्रोच ऑफ द आइज कैसे हम उस बोध को विस्तार दे पाते हैं। बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, जैसे अंधकार के बारे में उन्होंने कहा कि अंधकार भी तो एक चीज़ है। जब आप आँखों के बारे में बात करते हैं, प्रकाश के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हम ऐसे लोग जो अंधकार के बारे में बात करते हैं तो कितना सुहाना हो जाता है, और लगता है कि उस अंधकार में एक बिजली सी चमक गई। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो साहित्य अकादमी के इस उत्सव में विनोद जी जैसे और तमाम जो ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आए हैं, उनको हम दूर से नहीं बिल्कुल समीप से पा करके विनत हैं, प्रणम्य हैं। वे फिर कभी ऐसे विद्वानों की संगत मिले तो अपने जीवन को धन्य माने। नमस्कार। मैं युद्धवीर राणा नेपाली में लिखता हूँ। वास्तव में मैं एक कलाकार हूँ। छोटी अवस्था से ही मैं चित्रकारी, काष्ठ कलाकारी, भास्कर्य कलाकारी इत्यादि में इंटरेस्ट रहा और करता गया। तो काष्ठ कला में मुझे ऑल असम से बेस्ट प्राइज मिला 1966 में, और भास्कर्य कलाकारी में भी काम करता गया। अंत में समाज और जाति के लिए क्या चीज, समाज और जाति के लिए क्या चीज आवश्यक है, क्या चीज की कमी है, हमारी जाति हमारा समाज क्या चाहते हैं, उस पे हमने लिखना शुरू किया। और लिखता गया। अभी मेरे प्रकाशित 6 किताबें हैं और 5 किताबें प्रकाशित होने वाले हैं। मैं ज़्यादा नहीं लिखता। जो चीज़ खूब जरूरी है, जैसे कि मनुष्य के बाद समाज को, जाति के लिए क्या चीज की जरूरत है, जैसे अब
जाति को जीवित रहने के लिए भाषा, साहित्य, संस्कृति की खूब आवश्यकता है। तो उसी में हमने लिखा 2 किताबें नेपाली संस्कृति के विषय में लिखा, और अंत में फिर 2020 में नेपाली लोक संस्कृति और लोक साहित्य और लोक संस्कृति, ये खूब जरूरी है। तो उसी में एकेडमी को शायद एकेडमी खुश हुई और मुझे एकेडमी पुरस्कार देने में निमंत्रित किया गया है। तो संस्कृति के बारे में, जैसे कि अब हमारा जो लोक संस्कृति है और लोक साहित्य और लोक संस्कृति लुप्त होता जाता रहा है। हम अपने संस्कृति को छोड़कर, हमारे नेपाली संस्कृति में बहुत से ऐसे कलाएं हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, और उसके बदले में पश्चिमी सभ्यता, रैक, पॉप, ब्रेक, कैबरे सब हमारे इसमें आ रहे हैं। अभी हमारा लोप होता जा रहा है और उधर वाले जो पश्चिमी संस्कृति है वो चीज़ आ रही है। इसलिए मुझे दुख लगा, तो उसी में लिखा और एकेडमी पुरस्कार से अभी बुलावट हुई। तो असल में मैं अपने को साहित्यकार के रूप में अपने को मैं स्वीकृति नहीं देता हूँ। मैं खाली समाज के और जाति की आवश्यकता के लिए मैंने लिखा है। जैसे छूत अछूत, ऊपर ब्राह्मण, इधर शूद्र, पानी न चलना, न छूना, छुआछूत हो को, इस तरह से ये जो डिफरेंस है उस चीज के लिए मैंने मानव यात्रा लिखा। वो चीज खूब आवश्यकता है मनुष्य के लिए, हमारी जाति के लिए, मानव जाति के लिए, और संस्कृति, साहित्य, संस्कृति। तो इसी के लिए काम करता गया हूँ। अभी तो ज़्यादा उम्र हो गया, अब आंखें भी, आंखों की रोशनी कम होती के चली गई हैं। अब क्या करें, इच्छा तो होती है कि कुछ करूं, लिखूं, मगर इधर बनता नहीं। एज भी हो गया, 85 रनिंग। पहले तो स्पोर्ट्समैन भी था, मैं वेट लिफ्टर था, बॉक्सर था। देखिए मेरा बहुत सा इस तरह जाते हुए मैं साहित्य में बहुत पीछे 80 सन के बाद मैं आया। और ऑल इंडिया आर्टिस्ट फेस्टिवल सिक्किम में जो हुआ, ऑल इंडिया 50, यहीं से साहित्य कला एकेडमी से, ललित कला एकेडमी से 2005 में ऑल इंडिया वर्कशॉप, एक आर्ट वर्कशॉप रखा था, उसमें भी मुझे भी बुलाया गया था, मैं आया। तो 5-7 दिन का वर्कशॉप हुआ, उसमें एज ए स्कल्पटर आया था मैं, एक कलाकार के हिसाब से। लेकिन वो मुझे चिट्ठी बाद में न मिलने से क्या हुआ, मैंने जो खोदने के लिए जो औजार चाहिए, काठ खोदने के लिए जो औजार चाहिए, उसमें मुझे इंफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो बाद में मुझे पेंटर, चित्रकारी पेंटर होके बैठना पड़ा। जो भी है 2 पेंटिंग किया मैंने। तो इसी तरह से काम करता गया। अब तक कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कुछ न कुछ। अभी भी मेरे ये स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, कविताएं, गीत, और गीत भी गाता हूँ मैं, गीत कलाकार। मैंने वो क्लास 7 में पढ़ते समय, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणहीन, ये श्लोक जब मुझे मिला, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणहीन, तृणम न खादन न पी जीव मानस तत् भाग्य देयम परम पशुनाम, ये श्लोक से मुझे प्रेरणा मिली और मैं कलाकार बनता गया, साहित्यकार बनता गया, संगीतकार बनता गया। बस इसी तरह चलता आया हूँ। धन्यवाद। यहीं तक, सभी को प्रणाम। Thank you, sir. Basically, Tamil writer, Tamil
பேச விரும்புகிறேன். என்னன்னா, தமிழ் செழுமையான பழமையான மொழி. அந்த மொழியில் பேசுறது எனக்கு முக்கியமான விஷயமா தெரியுது. ஏனென்றால் தமிழ் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ். ஏன்னா முதலில் பாரதியும் புதுமைப்பித்தனையும் வணங்கி என்னுடைய பேச்சை தொடங்குகிறேன். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட பாரதியும் புதுமைப்பித்தனும் நவீன இலக்கியத்தினுடைய முன்னோடிகள். இந்த முன்னோடிகளை கொண்டுதான் இந்த வாழ்க்கையை தொடங்குகிறேன், இந்த எழுத்தை தொடங்குகிறேன். ஏன்னா இப்போ தமிழில் ஏற்கனவே பழந்தமிழ் இலக்கியம் இருக்கு. சங்க இலக்கியம் ஒரு சங்க பயிற்சி பெரிய விஷயம். தமிழில் கிட்டத்தட்ட 2000 ஆண்டுகளாக புழுங்குகிற மொழி இந்த சங்க இலக்கியம். அந்த சங்க இலக்கியத்திலிருந்து நான் இந்த நாவலை தோத்துக்கொள்கிறேன். நீர்நிலைப்படும் அப்படிங்கிற நாவலை சங்க இலக்கியத்தை முன்னோடியாக கொண்டு தொகுத்து கொள்கிறேன். இப்போ நீர்நிலைப்படும் இப்போ அதற்கு முன்னால் 3 நாவல்கள் வந்திருக்கு. இது 4ஆவதா நொய்யல் அப்படிங்கிற நாவல். இந்த நாவல்களை எழுதுவதற்கு ஆக்சுவலாக ஒரு 40 வருஷம் ஆச்சு. இந்த நாவல்களை எழுதுவதற்கு 40 வருஷமாக 40 வருஷ உழைப்பு. அடிப்படையில் நொய்யல் அப்படிங்கிற நாவல் தான் முதல் எழுத தொடங்குது. நொய்யல் நொய்யல் கரை அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி, எங்கள் ஊரை சேர்ந்த ஒரு பகுதி, நொய்யல் ஆறு. அந்த ஆற்றை பற்றிய நாவல், அந்த ஆற்றில் வாழும் மனிதர்களை பற்றிய நாவல், அவர்களுடைய நெருக்கடிகளை பற்றிய நாவல், அவருடைய போராட்டங்களை பற்றிய நாவல் நொய்யல். அதுதான் 28 வருஷம் முன்னால் தொடங்கினேன். ஆனால் கைகொள்ள பல எல்லாம் இந்த நாவலினுடைய மொழி எனக்கு முக்கியமாக இருந்தது. மொழியை செப்பனிட்டு கொண்டே இருந்தேன். அதுக்கு இடையில் தான் என்னுடைய இந்த நிழலின் தனிமை அப்படிங்கிற நாவல் அமெரிக்காவில் வைத்து எழுதினேன். அமெரிக்காவில் ரெசிடென்சி ப்ரோக்ராம், அந்த ரெசிடென்சி ப்ரோக்ராமுக்கு போய் அங்கே வைத்து எழுதின நாவல் தான் நிழலின் தலைமை. அப்புறம் நடராஜ் மகாராஜ், தமிழில் அது பெருமளவில் பேசப்பட்டது. நடராஜ் மகாராஜ் சோசியல் மட்டும் இல்லாமல் ஏலத்தில் பேசப்பட்டது. அதற்கு பிறகு நடராஜ் மகாராஜே சாகித்ய அகாடமிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. என்னுடைய 2வது நாள் முதலில் பட்டியலில் முதலில் அதுதான் இருந்தது நடராஜம்மா. அதுக்கப்புறம் ஏனோ வரல. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து தான் நீர்வழிப்படும். அந்த நாவல் வந்த சமயத்தை கொரோனா பீரியடு, கொரோனா சமயத்தில் வேறு ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை. நான் என்னுடைய அறையில் உட்கார்ந்து கொண்டு எழுதினேன். எழுதி முடித்த போது கிட்டத்தட்ட கொரோனா அதிகமாக ஆயிடுச்சு. ஆனால் அதற்கு பிறகுதான் நொய்யல் அப்படிங்கிற நாவல். இப்போது இந்த நாவலை பற்றி ஏன் சொல்லலாம், இது எல்லாமே ஒடுக்கப்பட்ட மனிதர்களை பற்றிய நாவல். ஒடுக்கப்பட்ட எங்கள் பகுதியில் வாழக்கூடிய நாவிதர்களை பற்றிய நாவல், பார்பர்ஸ் அவங்கள பற்றிய நாவல். அந்த பார்பர்களை பற்றி எழுதின நாவல் தான் இப்போ சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருக்குது. இந்த நாவல் இந்த மனிதர்களை பற்றியும் இந்த வாழ்க்கை பற்றியும் எனக்கு நீண்ட காலமாக எழுத வேண்டும் என்று தோன்றியது. ஏனென்றால் இவர்கள் என்னோடு வாழ்ந்தவர்கள், இவர்களோடு நான் வாழ்ந்திருக்கிறேன். இவர்களுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை. இந்த வாழ்க்கையை மீண்டும் புனரமைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். இந்த வாழ்க்கையை மீண்டும் அவர்களோடு வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அந்த முறையில் தான் இந்த நாவலை தேர்ந்தெடுத்தேன். ஒரு 8 மாதங்களில் எழுதி முடித்தேன். இது நான் மிக விரைவாக எழுதி முடித்த நாவல். அது கொரோனாவுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் நிறைய பேச முடியாது, நேரமில்லை. அதனால் இப்பொழுது இந்த பேச்சை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Respected award winners, honored guests,
much has been spoken so far. I think I'm the last speaker to speak something here. I won't take your much time. Just I will give an elementary introduction of myself. I belong to Jammu and Kashmir. As all of you know, Kashmir is called the paradise of India, rather crown of India. I do write in Kashmiri language as well as in Urdu language. I have written so far 26 books. 20 books are published. Kashmiri language is the oldest language of India. It has almost 5,000 years age. It has passed through different stages of development. From mysticism, it passed through classical stage, then to modern literature, and then postmodern literature. It has different variety of genres. Presently, they are being carried out. The book, presently, I have also made some translations. I have been research officer for a pretty long time and a resource person to the new policy on education. I taught for 41 years and retired as a principal of school education. Presently, the book that has been awarded by Sahit Academy, my book, it is called Yathwa Wahale Sung Kuzale. It means, who will light the lamp in the fast winds? This title has been taken from the religious saint of Kashmir, Sheikhul Alam. Kashmir, he is supposed to be the legend of Kashmiri writings. So he says that in the world, peace is never possible unless technology and morality go hand in glove. They go in side by side. Because the person who invented atom bomb, had he got some ethical realization or moral values, he could not have destroyed such a vast population. So his aim is to that in modern world, if we want to sustain peace, to have globalization peace, then education and technology have go to side by side with morality. And this is the main theme of my book. It is spread over 700 pages. It has seven different parts, and it is depicted. I educate this book. All you see, it educates human values, international peace, and like you see topics. So I don't want to, because I think most time has been taken over by friends. So I want to conclude and to pay my best thanks to all of you. Thank you very much. Okay. आप सभी के प्रति साहित्य अकादमी की ओर से बहुत ही आभार। आप सब ने जो अपनी रचना के यात्रा के बारे में बताया और अपनी पुस्तक के बारे में बताया, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है कि हम उस पुस्तक के बारे में पढ़ने के लिए हमारे भीतर एक ललक जागेगी। मैं सभी श्रोताओं का भी, मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके प्रति भी आभार। एक बार एक ग्रुप फोटो के लिए प्लीज आप लोग एक साथ हो जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अब भोजन के लिए आमंत्रित हैं। अगला कार्यक्रम हमारा 2 बजे से शुरू होगा। आप लोग समय पर कृपया सभागार में पधारिएगा।
हेलो 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 चेक हेलो हेलो हेलो
Good afternoon and welcome back to Mirabai Sabhagar. Here we will have a panel discussion on importance of mother tongue. Shri Mohan Gehani ji, distinguished Sindhi poet, critic and translator, will chair this session. At the outset, I request Shri Mohan Gehani ji to please come onto the stage. Eminent writers and poets will take part in this session. As speakers are Ajit Dubeji. I request Ajit Dubeji to please come onto the stage. Shri Madan Mohan Sorenji. Shri Melvin Rodriguez ji. Silvanus Lamare. And Uma Nanduri ji will join us hopefully very soon. Mohan Gehani ji, who chairs this session, is a noted Sindhi scholar, playwright, poet, translator. He was among those initial writers' group who struggled to build up Sindhiyat movement and work for inclusion of Sindhi language in the Constitution of India. He is the author of numerous books and is a recipient of several awards, including the Sahitya Akademi Award in 2011 and the Sain GM Saeed Memorial Award, London. He has also received awards for his book on history of Sindh, Sahitya Akademi Translation Prize and Madhya Pradesh Gaurav Award. He was a member of the Sindhi Advisory Board of Sahitya Akademi. Shri Ajit Dubeji writes in Bhojpuri and has regularly contributed to various national newspapers and penned the book Talash Bhojpuri Bhashai Asmita Ki. Shri Dubeji has received a number of prestigious awards such as the Rajiv Gandhi Prerna Puraskar in 2007 from the Chief Minister of Maharashtra, Karmayogi Samman in 2009, Chandrasekhar Samman in 2011 by the National Thinkers Forum and International Bhojpuri Samman in 2014 during the International Bhojpuri Conference held in Mauritius. Presently, he is the National President of Vishwa Bhojpuri Sammelan. Shri Madan Mohan Sorenji is a poet, writer, playwright and lyricist in Santali language, and as well as a Santali language activist. He is a member of All India Santali Writers Association, Adivasi Socio-Educational and Cultural Association, Odisha. He was convener of Sahitya Akademi's Santali Language Advisory Board. Presently, he is working towards establishment of a national tribal university and National Council for Promotion of Santali Language and National Council for Promotion of Indigenous Languages in India. Melvin Rodriguez ji writes in Konkani and is currently working as the Director, Operations, Daiji World Media Private Limited. He is the founder of Kavita Trust, which has organized more than 200 programs on poetry and published 33 books till date. His published works include 1 novella, 6 collections of poems, 3 translations, 2 collections of essays, 6 edited works. He is a recipient of Sandesha Award, Sahitya Akademi Award for Prakriti Chopas, Best Konkani Book Award for the book Prakriti Chopas, Karnataka Konkani Sahitya Akademi Honorary Award for Literature. Currently, Melvin ji is convener of Sahitya Akademi's Konkani Advisory Board. Silvanus Lamare ji is a modern Khasi scholar, linguist and translator. His first poems were published in You Kritik, a local literary magazine, and since then he has more than 20 published books to his credit in Khasi and English.
Due to his efforts, UNESCO declared that Khasi is out of the list of endangered language. He has been honored by the Zhejiang Chinese Writers Association in 2005 for his short stories and poems based on China. Currently, he is principal, St. Edmund's College, Shillong. Hopefully, as I told earlier, Umanandurji will join us soon. I request the chair to please open the session now. Dear friends, distinguished personage on the stage, as equally distinguished audience. Isn't it a very strange thing that I am speaking about importance of mother tongue in a tongue which is not mother tongue of any of us? That itself underscores the importance of the subject. Now, in this process of globalization, urbanization, consumer society, as we call it, we are getting a class which is detached from its soil. Some of the new generation has not seen their villages. It's a different thing, we don't have villages. I'll come to that later. I was appalled to find that there is not a single private Marathi medium school in Bombay. And there is not a single Hindi teaching medium school in Bhopal. I do not know what is the state of affairs in other state capitals. So we are faced with a huge problem. And unless we don't understand the change that we are going through, the basic things, we will not be able to understand the importance of the mother tongue. Before I speak of the mother tongue, it would not be out of place to consider the basic relationship between mother and the child with mother tongue. Child depends on his mother for the very basic physical survival for nourishment. Though the umbilical cord is severed at the birth, but the emotional cord of the child with the mother continues throughout life. In order to provide emotional nurturing to the child, mother expresses her deep emotions through words also and utters inane, endearing words, singing lullaby to her child, in which many words are improvised and do not mean anything. Those first sounds that child hears builds the reservoir of the unconscious mind of an individual. The child also hears the sounds of those who are immediately in touch with him and absorb the sounds after certain growth. He tries to imitate those sounds as gibberish. Mother tongue is a stage where mimicking the sounds and at the exploration of the objects, the child identifies those objects and relationships. Thus, the first building blocks of the world for the child are built. The language is like a sanskara. I can't find
equivalent word in English language, that conditions behavior throughout and eventually shapes the worldview and value structure of the individual also. Without any time, the language of communicating with mother is bedrock for the first meaningful and intimate relationship in individual's life. Strangely, when the child is crying, the mother knows whether he is hungry, whether the child is thirsty, or he has a stomach ache or an earache. That the cry of the child itself becomes intelligible to the mother. And this way, the relationship between mother and the child and emergence of the mother tongue is understood. It would be important to bear in mind that the language is oldest tradition of man, and the linguistic areas are carved by nature that remain constant. Language is like a river that is enriched by many tributaries in its historical moment. At the same time, it turns into various flows. It would be fallacy to treat language as a biological process and say that a particular language is born out of a particular stock. The inhabitants of the area share the same historical experience, and in a way, the language is a capsule of historical experience of that area. The literature and culture of that area reflects the ethos and the value structure of the region. It becomes an important force to weld people together. A language does not change with the political boundaries and is not limited to any religion. Max Muller and William Jones had not to convert to Hinduism to learn Sanskrit language, and nor did Indians had to be Christians to know English language. Language has no religion. Particularly in the case of Sindhi language, now I'm coming to my anguish. In India, the situation is quite exceptional. In the aftermath of the partition, Hindu population of the Sindh migrated to India and was strewn all across India like leaves of a tree after a severe storm. In fact, it was not the full society as it existed in the Sindh. It was, in fact, a ribbon of a society consisting mainly of middle class, professionals, shopkeepers, and a sprinkling of landowner. A vast population that happened to be Muslims, consisting of landlords, peasants, and artisans remained back. So in India, we do not have any potter, any blacksmith among Sindhis. Thus, this resulted not only in loss of vocabulary related to agriculture, flora and fauna of the land, but also of a pastoral life and the words used in many trades like those of blacksmiths, carpenters, potters, masons, and many other artisans. Thus, the partition of the country, in a way, resulted in constriction of our vocabulary for the generation that has grown up in India. It's not only the land that we have lost our vocabulary also. At the same time, our creative literature is devoid of any rural background. I can't write anything about the village life and the farmers. It must be admitted that the words of various languages where Sindhi population resides in sizable number have adopted many local, colloquial words and expressions, but they remain limited to that region and do not form a part of mainstream language vocabulary. In India, Sindhi population is less than 0.5%, and that too spread all over India, not to speak of Sindhi diaspora across the globe. In India, the population is mainly settled in cities and towns, and not in villages. The urbanization in its wake comes with a loss of many facets of life.
The giant family no longer remains. A norm and nuclear families come into vogue. In this situation, the tradition of grandparents sharing their tales with the grandchildren in the courtyard at night in their mother tongue are lost. A story of a prince riding a white horse with shining armor to save a captive princess vanishes with its lost the innocence, imagination, and eager expectation. Many such stories are lost. This phenomena is common to all other languages also. But in case of other languages, they have villages to support those and other oral historical traditions. There used to be tradition that the family would sleep in open courtyard during summer and the elders would show the pole star and other constellation like a Saptarishi to children. It is only 2 generations ago that the neighbors, children of neighborhood will play outdoor games like gilli danda, hide and seek, and many other games. Now they are addicted only to the phone games, mobile games. In urban life, we have not only lost the land, but also lost the part of our sky. It is not mere a loss of a language, but the entire mode of living. Now in cities, we have a culture of a closed gymnasiums and vast stadiums for elite in place of a neighborhood open spaces for the children to play. In fact, the clock of history cannot be turned back. Yet we have to make efforts to preserve what is most precious to us. Do we want to preserve the childhood of our future generations? It may be argued that in India, the Sindhi language has mostly lost its utility aspect, and the speakers have become indifferent to its survival. In this context, I would like to bring out a fact that a person is born with 2 eyes, 2 ears, 2 kidneys. If due to any accident, one of those is lost, the person continues to live with 1 organ, but that is an unnatural state of being. The mother tongue is natural state of being, and now the most pressing question that stares to us is by whether we want our deprived future generation to be deprived of our mother tongue and want to condemn our coming generation to such an unnatural state. The silver lining is that in the space age, the planet Earth that is going to remain the reference point, and to find their bearings for the earthling in the vast space. And while even in a space, person would continue to be bound to a particular linguistic region like invisible umbilical cord of his mother and thus remain connected to it. But that is the only flicker of hope in the grim situation. I have hopes in emerging power of artificial intelligence, where physical, geographical distances will be rendered irrelevant, and the space age does not recognize any natural boundaries. As artificial and physical boundaries matter less and less, it may be emphasized the man will have to be rooted to the earth and mother tongue to find his identity. Politics and political power has and will always remain transitory. History bears testimony to this fact. Thank you for listening to me. Now I will invite all the distinguished persons on the dais to please share their views. Thank you very much. As the chair said, I request Sri Ajit Dubey to please come and share his views. आदरणीय मंच और मित्रों, नमस्कार।
कार्यक्रम के शुरू में मैं आयोजकों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना सुंदर और भव्य आयोजन साहित्य अकादमी के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, हम माँ, मातृभाषा और मातृभूमि को भूल नहीं सकते। विश्व की असंख्य भाषाओं में मातृभाषा सबसे प्रिय होती है। असंख्य भाषाएं, भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। यह भाषाई विविधता है, ये हमारी सनातन की ताकत है। सदियों पुरानी इस भाषाई विविधता के बावजूद हमारा परस्पर संपर्क और संवाद मजबूत और सौहार्दपूर्ण रहा है, और भाषाओं के बीच में भी आपस का संवाद बना रहता है। इस पूरे सत्र के दो मुख्य केंद्र बिंदु हैं, मातृभाषा और उनका महत्व। मातृभाषा वो पहली भाषा जो एक बच्चा अपनी एक माँ की गोद में सीखता है, ये उसकी मातृभाषा होती है। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। मातृभाषा के महत्व के लेकर संस्कृत के कई श्लोक हैं। एक महत्वपूर्ण श्लोक का भावार्थ है, जो लोग अपनी मातृभाषा का त्याग कर दूसरी भाषा अपनाते हैं, वह ज्ञान रूपी सूर्य का उदय नहीं होता है। इस एक सूत्र में अब कई संवाद सत्र विषय को समेटा जा सकता है। मातृभाषा का महत्व इसलिए है ताकि ज्ञान के सूरज का उदय हो। भारतेंदु ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा का विकास जीवन में सभी उन्नतियों के द्वार खोलता है, सभी का आधार है। देश की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए मातृभाषा का अहम योगदान होता है। दुनिया के जो विकसित देश हैं, उनके पीछे उनकी मातृभाषा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, साउथ कोरिया इसके कुछ उदाहरण। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को भाषा का दर्जा दिया गया है, और कालांतर में 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। 64-66 में कोठारी आयोग ने त्रिभाषा फार्मूले की शुरुआत की। किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए और उसके विकास के लिए सबसे बड़ा विषय है संकल्प, और संकल्प मातृभाषा में लिए जाते हैं, विदेशी भाषा में नहीं। भारत न केवल भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से विविधता को समेटे हुए है, बल्कि भाषाई रूप से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। भारत में लगभग 1652 भाषाएं थीं, और यूनेस्को द्वारा संकटग्रस्त भाषाओं पर 2010 में जारी की गई इंटरैक्टिव एटलस रिपोर्ट बताती है कि भाषाओं को भूलने में हम सबसे आगे हैं, फॉलोड बाय अमेरिका। हाल में विश्व पुस्तक मेला 2024 संपन्न हुआ। मेले की थीम बहुभाषी भारत, एक जीवित परंपरा। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और भाषाई विविधता को दिखाया गया। भाषाई विविधता भारत की एक ताकत है। भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण हमें बताता है कि पूरे देश में तकरीबन 780 भाषाएं हैं। ये भाषाएं 86 लिपियों का उपयोग करती हैं। भाषाई विविधता हमारी सभ्यता का आधार रहा है। हमारी मातृभाषा सिर्फ संवाद का ही माध्यम नहीं है, बल्कि हमें अपनी विरासत से जोड़ती है। हमारी विविधता भरी संस्कृति की खूबसूरती को सिर्फ मातृभाषाओं को प्रोत्साहित करके ही बचाया जा सकता है। मातृभाषा जीवन की आत्मा है।
अपनी भाषाओं को संरक्षित करके ही संस्कृति और परंपरा की रक्षा की जा सकती है। भाषा संस्कृति को मजबूत करती है और संस्कृति समाज को मजबूत करती है। राजनीतिक सीमाएं बदल सकती हैं, लेकिन हमारी मातृभाषा और हमारी जड़ें नहीं बदलेंगी। इतिहास गवाह है कि जर्मनी का एकीकरण के पीछे उनकी भाषाई अस्मिता और भाषा के प्रति, मातृभाषा के प्रति स्नेह और प्रेम था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा में नहीं बल्कि किसी अन्य भाषा में शिक्षा पाते हैं वो आत्महत्या करते हैं। उनका जन्मसिद्ध अधिकार छीन लिया जाता है। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनेस्को का मानना है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए, तभी प्रारंभिक और आधारभूत शिक्षा कारगर होगी। मातृभाषा के महत्व पर अपनी बात कहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 फरवरी 2022 को मन की बात कार्यक्रम में कहा, जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी कुछ लोग ऐसी मानसिक द्वंद्व में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए और हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसको तुलना ही नहीं की जा सकती। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि किसी भी भाषा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा और शायद सबसे कठिन तरीका है उस पर बोलने वाले लोगों के लिए आजीविका का निर्माण किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 35 साल के बाद आई, लेकिन भारत की आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज तक भारत में भाषा नीति नहीं बन पाई। बहुत सारी विसंगतियों की जड़ भाषा नीति का न बनना भी है। केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं के जरिए जन मुहिम चला रही है। इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जामिनेशंस के लिए मातृभाषाओं में इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। ये एक प्रशंसनीय कदम है। पर विडंबना देखिए, मेरी भाषा जो भोजपुरी है, जिसको लगभग 20 करोड़ लोग बोलते हैं, जो हिंदी के बाद भारत में सबसे बड़ी भाषा है, और सेंसस जो भारत सरकार का 2011 में आया, 2018 में, उस सेंसस ने उस भाषा को 6ठे नंबर की भाषा बताया देश में। वो मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। उसको मान्यता न मिलने से बहुत सारी उन सुविधाओं से ये भाषा वंचित है जो अन्य छोटी भाषाएं जिनको बोलने वालों की संख्या 20 लाख 30 लाख है। लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड में डिमांड और सप्लाई बहुत महत्वपूर्ण है। भोजपुरी की विडंबना है कि ये बाजार की भाषा बन गई। 2023 में पहली बार IPL की कमेंट्री भोजपुरी में हुई, वर्ल्ड कप की कमेंट्री भोजपुरी में हुई। भाई 2023 में भोजपुरी माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन की भाषा बन गई। ये बहुत बड़ा काम रहा। इस सुविधा से 20 अन्य भाषाएं भी ये बनी हैं और 100 भाषाओं से ये जुड़ गया है। एक बार और कहना चाहता हूँ कि आज तक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो पहला भाषाई मॉडल दिया वो भोजपुरी में ही था। UPI सेवाओं में भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसने दुनिया भर में भारत के UPI भुगतान को एक नई क्रांति दी है। ओवर द टॉप पर भोजपुरी सिनेमा और संगीत बड़ा बाजार है। हाल ही में 9 मार्च 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने 22 भारतीय भाषाओं को 52 प्राइमर लॉन्च किया। उन्हें उनकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा पहुंचा सकता है, लेकिन पुनः मेरी बड़ी मातृभाषा भोजपुरी उससे वंचित है। हाल ही की सभी घटनाएं भोजपुरी की क्षमता के बारे में बता रही हैं। साहित्य के अलावा भोजपुरी व्यवसाय की भाषा के रूप में भी मजबूत हो रही है। मैं प्रबंधन का व्यक्ति हूँ। बाजार, व्यवसाय या बाजार को समझता हूँ। मातृभाषा का सवाल सिर्फ साहित्य का मामला नहीं है, कि भाषा के अर्थशास्त्र से भी जुड़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार भोजपुरी, राजस्थानी और छत्तीसगढ़ी हिंदी की सबसे बड़ी सहभाषाएं हैं। जनसंख्या के आधार पर इन्हें बोलने वालों की संख्या क्रमशः 5.6 करोड़,
2.59 करोड़ और 1.62 करोड़ है। इन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता का प्रस्ताव राज्य विधानसभाओं से अनुमोदन के बाद लंबे से केंद्र सरकार के अधीन पड़ा है। यदि भोजपुरी, राजस्थानी और छत्तीसगढ़ी जैसी भाषाओं को मान्यता मिलती है तो अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मातृभाषा अस्तित्व से जुड़ा होता है, इसका संरक्षण बहुत जरूरी है, अन्यथा कोई भी समुदाय और संस्कृति नष्ट हो सकती है। मातृभाषा के अस्तित्व पर खतरा हमारे देश के लिए इसलिए उत्पन्न हुआ कि 200 साल अंग्रेज हम पर राज करके चले गए और उनका पहला प्रयास था हमारी संस्कृति को तोड़ना, हमारी मातृभाषाओं को तहस नहस करना। लेकिन कुछ अच्छी खबर भी है। अभी 2 मार्च 24 को दैनिक भास्कर में खबर छपी कि पिछले 2 साल के दौरान अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी विषय पढ़ाने वाले स्कूलों की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। अब 90 स्कूलों में यूएस में हिंदी के कोर्स चल रहे हैं। हिंदी के छात्रों की संख्या भी बढ़कर 14,000 हो गई है। मशहूर सिलिकॉन वैली के सरकारी स्कूलों में अगस्त से हिंदी वैश्विक भाषा कोर्स शुरू होगा। पहली बार हिंदी को वैश्विक भाषा का दर्जा दिया गया है। आज़ादी के 7 दशक बाद भी हम अपनी भाषा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बना पाए। वजह हमारी सरकारों का भाषाओं को लेकर अपनाया गया उदासीन रवैया। इसमें भाषाओं को लेकर अस्पष्ट नीतियाँ, कुछ भाषाओं को अनुसूचीबद्ध किया गया, वहाँ कुछ भाषाओं को ऐसे ही छोड़ दिया गया। अगर एक राष्ट्रीय भाषाई नीति बनती है, देश की कई विलुप्त होती भाषाएं को सहेजा जा सकता है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार हमेशा से भारतीय भाषाओं के पैरोकार रही है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास इस सरकार का मूल मंत्र है। उम्मीद है केंद्र सरकार देश की विकास में के राह में पीछे छूट गई मातृभाषाओं का भी विकास करेगी और जल्द एक उचित भाषा नीति बनाएगी। अंत में कहना चाहता हूं कि 35 साल बाद देश की शिक्षा नीति लागू हुई। आज़ादी के 70 साल के बाद भी कोई भाषा नीति नहीं बनी। आज भाषा नीति देश की आवश्यकता है। मेरी कामना है, मेरा विश्वास है कि भोजपुरी सहित देश की सभी मातृभाषाओं को उनका वाजिब हक मिलेगा। मुझे गर्व है कि मैं हिंदी भाषी हूँ। मेरा सौभाग्य है कि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। मेरी कामना है कि हिंदी यूनाइटेड नेशंस की भाषा बने, हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा बने, लेकिन देश की सभी मातृभाषाओं को भी उनका हक मिलना चाहिए। मुझे आमंत्रित करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुबे जी। बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर बात कही आपने मातृभाषाओं को लेकर और उनके संरक्षण के संदर्भ में भी। अब मैं निमंत्रित करता हूं श्री मदन मोहन सोरेन जी को अपनी बात कहने के लिए। Respected chair of this session, Sri Mohan Gihani ji, distinguished Sindhi scholar, co-speaker, discussants, respected audience, gentlemen, ladies and gentlemen, and those who are present here, and those who are listening to me. At the very outset, I would like to extend my civil johar to you, my namaste, my good afternoon to you all. So before talking about the significance of mother language, mother tongues, first of all, I would like to raise a question like, what is mother tongue? What is the significance of mother tongue? What do we understand by mother tongue? There are so many questions. Some said the mother tongue is the tongue or language which is used at the very beginning to a child or to a person. That is mother tongue. So there are also other, please, some say
that local language or vernacular language or regional language, these are also the mother languages. These are also the mother tongues. So correlation, there are correlations between mother tongue, mother languages, local languages, or vernacular language, what we say. For instance, for example, I would like to say, I am hailing from a Santal family. Santali is my mother tongue. I was born in a Santal family. The language to which I was interacted after born, that was Santali. As my mother was by born as Santali. Her mother tongue is Santali. So for the first time, after my born, I was interacted with the language that is Santali. So Santali is my mother tongue, I say. But in the case of Oriya family, a son is born in a Oriya family. What is his mother tongue? In the case of a child who is born in a Oriya family, the language to which he is interacted, that is in Oriya. He is interacted by his mother in Oriya language. And second thing, what happens, Oriya is also the regional language in the state of Orissa. Official language, Oriya language is a recognized language, constitutional recognized language, a local language, vernacular language, official language. Everywhere Oriya is being used. So Oriya becomes his mother language. On the other hand, the baby, the child who is born on Oriya family, his mother tongue is also Oriya. This has happened. But in the case of mine, my mother tongue is Santali. Because I was interacted at the very beginning in Santali language. I was acquainted with Santali language. So in my case, my mother tongue is Santali. And thereafter, Oriya becomes my mother language. But in the case of other children, like Oriya, we can say that Oriya is a state created on the basis of language. Orissa is the first state in the country which was created on the basis of language in 1936. Thereafter, so many states were created in the country. West Bengal comes out, and the state language in West Bengal is Bengali. So like that, in the case of Bengali family, when a newborn child comes, his mother tongue will become Bengali. And his mother language also becomes Bengali. So there are correlation among mother tongue, mother language, and local language or regional language, what we may say. So language is a very significant tool used for communication, for interaction, and for self-identification. So it is a very important tool in every stage, in every moment of all human beings. So here simply we can say the significance of mother tongue, the topic on which discussion is going on. Simply we can say that mother tongue is the language which is first introduced, which is interrogated to a child, to a person or to a man. So we are talking about the significance of mother tongue. So mother tongue has so many significance. Significance of mother tongue lies in some points that the mother tongue is the base
of learning other languages. Mother tongue is the best used for learning other languages. So mother tongue to which a child is taught, a child will become familiar with all other language through his mother tongue only, or through his mother language. So mother tongue plays very significant role in framing ideas, framing thinking, emotion, so many things. Mother tongue is also being used. Mother tongue is also the language which is used for interaction, for self-introduction. In mother tongue, we can see dream, we can feel emotion. So mother tongue gives so many things to us. It also ensures our efficiency in learning other languages, as I already said. Our characters, hidden treasures, shyness, or everything can be expressed very efficiently through mother tongue. Because the sound of mother tongue in the ear is suitable, it is easily accessible in its meaning. So mother tongue has a very significant role in framing our ideas, in framing our emotions, through which we can see dreams and other so many things. So mother tongue also links with the creature to which we belong, and it also shapes our identity. So mother tongues has so many things. It is in the case of learning, in the case of the world around us, through which we can know efficiently, clearly. So mother tongue stands, it gives us very significant result. In the case of education, mother tongue is used as a medium of instruction. It is also reiterated by UNESCO in its report in 2002. UNESCO has said that learning in mother tongue has very special value, very emotional value. It has very cognitive value. And period to 2002, in 2008, FAO, Food and Agriculture Organization of United Nations Organization, it has also reiterated that teaching in mother tongue increases the intellect of students. So mother tongue basically plays so many roles for the development, for the personal development or cognitive development of a person, of a child. Basically, in the case of primary education, what my former speaker said, new education policy is going to be implemented. After a long lapse of about 73 years after attainment of independence, new education policy, though it is introduced in 2020, and till yet it is not being implemented in the state of Orissa. As I know, as I am hailing from the state of Orissa. In other states, what is happening, it is beyond my knowledge. Though it is introduced in 2020, government has already declared about the introduction of mother tongue. But in the states of Orissa, till yet it is not being implemented. In what happened, whether it is implemented or not, that is a separate thing. So in the case of, government have realized the importance of mother tongue.
for introduction of mother tongue in primary education. After a long lapse of about 73 years of the attainment of independence. So my former speaker was saying about the inclusion of language in 8th schedule. His mother tongue is the Bhojpuri. Bhojpuri is not being enlisted in 8th schedule of Indian languages. My mother tongue Santali, is also very lately included in 2004, along with Bodo language. So this is also a matter of concern. That is why overall development of Santali language is lagging behind. Our chairperson, Sri Mohan Gihani ji, he is very fortunate that his language has a special development council for overall development of Sindhi language, National Council for Promotion of Sindhi language, already established by Government of India in 1994. At present, there are two such national councils. One is National Council for Promotion of Sindhi language, and another is National Council for Promotion of Urdu language, which was established in 1996. There are so many languages, only 22 languages are included and listed in 8th schedule of Indian Constitution. But so many significant languages are left beyond. Most of these languages are all marginal languages, or ancient language, all tribal languages of India. Only 2 tribal languages are included. There are near about 700 ancient tribal languages in India, spoken by the speaker of various tribal communities. Out of 20 to 30 such significant tribal languages, which are till yet not been included or enlisted in the 8th schedule of Constitution. As said by my former speaker, there is also need to include another such languages in the 8th schedule of Indian Constitution, because it would facilitate these languages towards holistic development. Santali language is though enlisted in 8th schedule in 2004. Thereafter, Santali language is leading to the pinnacle of development. Though it has not achieved the pinnacle of development, but leading towards development. In comparison to that of other tribal languages, those who are till yet not recognized, they are even under development. There is no scope of any government financial or government any patronage from the government of India or the state government. As I said, in the case of some states, in the case of some languages which are recognized by the state language, we can take the example of Orissa. Odia is the official language of Orissa. Odia is also the language enlisted in 8th schedule of India. It is also recognized by the government of Orissa for official purposes. Odia is being used. But that language is largely spoken, largely used in the state of Orissa and outside the state of Orissa by the speaker of Oriya language and others. This is happening. But in the case of Santali language, after a long lapse of about 30 or 40 years, Santali language has achieved constitutional recognition. Thereafter, we are trying our best towards the development of Santali language. Santali language is recognized by Sahitya Academy 2005. Thereafter, writers of Santali language are receiving awards from Sahitya Academy. Thereafter, we are attending such seminars, such programs, such seminars organized by Sahitya Academy. So we are achieving some development in the case of our mother language. So there are so many things. Once Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, they are of the opinion that there are 4 languages need to be recognized. Though
till yet there is no clear-cut language policy in India. What my former speaker said, that is 100% correct. Till yet, a clear-cut language policy is not being introduced. So prior to the attainment of independence, Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, they are of the opinion that 4 languages need to be recognized. First language, that is mother tongue. It is required to overcome the illiteracy. Because of lack of education in mother tongue, there are so many illiterate, there are so many people who are underdeveloped, who have as yet not achieved their minimum educational qualification. So that is the fact. The first language to recognize, that is mother tongue. And second language, that is link language. Link language means a language which can unify the speaker to others' language. Link language. And thirdly, a literary language. Through the usage of that language, literary knowledge would be developed. So third, a literary language should be recognized. And a fourth, international language for international communication. And that is English. So this was the views, this was the opinion of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru prior to the independence of the country. But as it is crystal clear that as yet new education policy is not implemented, we are till yet facing such difficulties in the case of introduction of mother language. These are the significant drawbacks to various mother tongues, mother language, particularly to those tribal languages, who are now treated as marginal language. Though Santali and Bodo, only 2 tribal languages are included, but so many tribal languages are left beyond. That these languages are now treated as marginal language. And this is also another drawback to the development of those languages. So I think each government is serious and enough towards the development of this language. At present, so many tribal languages are leading to the verge of extinction. Anyhow, Santali language is enlisted in 8th schedule. After a long linguistic movement of 20 years, Santali language is saved from extinction. We will have to admit it. Bodo language is saved from extinction. But so many tribal languages, which languages are used by very few number of people. So the country needs clear-cut language policy. How unscheduled languages can be preserved, how tribal languages or marginalized languages of the country can be preserved, can be revitalized, can be disseminated. This is the big question at present arising before us. So I think former speaker was also said that new education policy is going to be implemented, and in the case of technical education, in medical education, on the basis of new education policy, regional languages will be used. This is a very good initiative, novel initiative taken by the government of India. That technical education, engineering education can be at present had in regional languages. Medical education, we can also have in regional languages. So these are the things. So my concern about mother tongue is that at present so many tribal languages, so many marginal languages are being left out by the government of India, and government of India or the concerned authority
should be serious enough, should take appropriate measures towards the development, holistic development of those marginal language, of the tribal languages, and other mother languages, mother tongues. So with these few words, I conclude my words here. I once again extend my thanks to the chair, Dr. Sri Mohan Gehaniji, co-speakers, and respected audience and others. Thanking you all. Johar, Namaste, and good afternoon to you all. Thank you, Sorenji. Now I invite Sri Melvin Rodriguez-ji to speak. Respected Chair, distinguished guests on the dais, off the dais, and my dear friends, namaskar to you all. As the Chair has already said, I've been asked to give my views on the importance of mother tongue, unfortunately not in my mother tongue. There might be individuals here who can fluently converse in 1, 2, or perhaps even 4 languages beyond their native tongue. However, in Mangalore, my place of origin in India, such linguistic versatility transcends expectations. Here, it is customary for individuals to command proficiency in at least 5 languages. Hailing from Mangalore myself, I am well versed in the linguistic tapestry. Konkani, my mother tongue, Tulu, the local language, Kannada, the regional language, Hindi, and English. Everyone in Mangalore knows all these languages. Some even know one more language of the place known as Bari, and speak Malayalam of the neighboring state too. With all these languages, I am different from all others because of my mother tongue. And because I am different, I stand out among the big crowd. My mother tongue has given me the identity. If I had started writing in English instead of my mother tongue, I would have lost in the ocean of English. That is why I believe mother tongue helps to create the identity one needs. This linguistic richness not only distinguishes us in a crowd, but also bestows upon us a profound sense of identity rooted in our mother tongue. As the world undergoes rapid transformations, embracing new lifestyles and evolving modes of thought, the phenomena of cultural assimilation remains omnipresent. Yet, amidst these shifts, I steadfastly cling to my native language, Konkani, despite its relatively modest speakership of 25 lakhs. Allow me to illustrate how this attachment endures through an example. In our Konkani community, there exists a culinary treasure known as sanna. Resembling the ubiquitous idli, sanna is distinct in its texture and aroma, evoking a flood of memories and cultural imagery with its mere mention. Idli is usually flat. They add more urad dal to it. The batter is coarsely ground and not smooth paste. But sanna are soft like cotton and bigger in size than the idlis. When I take the name of sanna, its aroma engulfs my nostrils and 100 images of my community are displayed in front of my eyes. Legend has it that the name sanna derives from sadhana. And in bygone eras, the fermented sannas served as a revered offering to the upper echelons of society in temples, while the lower caste received rontan, a humble steamed rice flour. In my childhood, at least 2-3 times in a year, we used to make 300 to 350 sanna for various feasts. If the feast was on a Sunday, the ceremony of making sanna would start on Friday evening. The parboiled rice, raw rice,
and the urud dal were strained to remove the stone and other impurities and washed thoroughly. Then they were kept soaking overnight. Saturday morning, members of the family would take turns to grind this mixture on grinding stones. The batter was to be very smooth. By the time all the mixture was ground, it would be evening. The boys of the family used to go to fetch toddy, either from coconut or palm trees from faraway toddy shops. It was the job of the boys always. There was no yeast available those days, and toddy was required for fermenting the batter. Once the toddy was added, this batter was kept in warm places like near the firewood ovens for 7-8 hours in pots. The pots were covered with cloth to avoid any insects or small creatures getting in. Mother would get up every half an hour in the wee hours of morning to check the batter to see if it fermented and swelling out of the pot. Once the batter is fermented, the firewood ovens were fired and steaming pots were heated. These pots had water at the bottom covered with a perforated plate over which sanna molds were arranged. The batter was poured into these molds, or as we used to call them, gindals, as they were called. Once the sanna were steamed, these gindals were put on the plantain leaves upside down. Wet cloths were put on these hot gindals. The hot sanna taken out from the gindals were kept on the white cloth spread on the table. They were arranged into wire baskets once they were cooled. And the aroma wafting from this sanna at that time is not comparable to any idlis. It's just not over till we distributed this sanna arranged on plates to the neighbors and nearby family members. I narrated these things to convey to you the cultural images that play in front of my eyes when I hear this one word, sanna, from my language. Just one word has the capacity to bring one whole culture in front of you. What if my language is spoken by only 25 lakh people when it has such capacity in it? This word still engulfs me with its aroma without making sanna. Even now, we prepare sanna with toddy at least 2-3 times in a year. I bring the toddy and my wife steams the sanna. The allure of sanna lies not only in its culinary appeal, but also in its ability to evoke profound sense of cultural nostalgia. This single word conjures images of familial bonds and communal feasts, transcending mere gastronomic significance. There are many words in my language. Another word may be the famous fenni that have similar capacity. This capacity is different. The linguistic capacity of the word sanna in my language is different from the linguistic capacity of the word idli in your language. And because of this capacity, despite the inevitable forces of cultural assimilation, I remain steadfast in my devotion to my mother tongue. For me, this linguistic attachment serves as a beacon of identity amidst the ebb and flow of societal change. Another thing I want to express is how my mother tongue provides me with a sense of security in a foreign land. The joy, tranquility, and feeling of being among one's own people when two individuals sharing the same mother tongue meet, alleviate the mental strain. Allow me to illustrate this with an example. During my 14 years in the UAE, upon arrival, I encountered 2 or 3 associations in Abu Dhabi and Dubai, initiated by people from my homeland. However, since they operated in English, individuals with regular jobs from my community did not attend their events. One association invited me and I joined under the condition that they organize programs in Konkani. They agreed to a 50-50 arrangement, and I became a member. Over the next 2 years, ordinary folks started attending their events due to their yearning for their mother tongue. In my 3rd year, upon moving to Dubai, we established a Konkani association.
Its inception led to a surge in Konkani events. Within the UAE alone, approximately 15 Konkani associations were formed in the subsequent 5 years. This demonstrates how we can unite in foreign lands through our mother tongue. These associations provide a sense of security, preserve creativity, and bring satisfaction, tranquility, and joy to the community. I believe that my mother tongue is a potent marketing tool. While there are numerous suitable tools available, few possess the same level of efficacy. Recently, I was tasked with organizing a Konkani Sammelan with a budget of approximately 25 lakhs. Only 3 of us were responsible for raising funds. One Konkani institute pledged 10 lakhs, and it was decided to raise another 5 lakhs through registrations and advertisements. Despite our efforts, we still faced a shortfall of 10 lakhs and were pressed for time. I identified 2-3 philanthropists and wrote to one of them. Although he hailed from my community, he was a US citizen and his business dealings were conducted in English. I penned a heartfelt letter in Konkani extolling the virtues of our language and highlighting how he could contribute to its greatness. To my amazement, he pledged 10 lakhs within 8 hours and delivered the amount within 15 days. Now, don't ask me for his contact number and email ID. I could provide countless examples of the power of leveraging one's mother tongue to achieve remarkable outcomes, whether it's for the preservation of the language or the betterment of the community as a whole. Besides, on many occasions, our loved ones at home may not be able to converse in any language other than their mother tongue. The joy and contentment we can provide them by communicating in our mother tongue are boundless. It is imperative to grasp the culture of people before attempting to comprehend them. Understanding their mother tongue is key to understanding their culture. Consequently, diplomats who comprehend the mother tongue of the countries they serve in often achieve the most success in international politics. This list could continue indefinitely, depending on one's experiences. I have touched upon a few points, and other distinguished guests on the dais contributed many more insights. The innate ability of a newborn child to acquire its mother tongue within the first 3 years is nothing short of miraculous. Chomsky posits that language is an inherent part of the human genetic structure. Therefore, our mother tongue is an intangible aspect of our being. Considering profound role of our mother tongue plays in our lives, I conclude with this note that it is our sacred duty to nurture and preserve it. Thank you, one and all. Thanks a lot, Melvinji, for your wonderful presentation. Your idea to draw an analogy between regional cuisine and mother tongue was simply amazing. Thanks a lot for your presentation again. Now I invite Sri Sylvanus Lamareji. Good afternoon, respected Sir Mohan Gahini, then Ajit Dubey, Madan Mohan Soren, Melvin Rodriguez, and distinguished listeners this evening. Well, when Sahitya Akademi invited me for this important topic, that is the importance of mother tongue, I was actually reluctant before, because this is a very thorny issue in the country right now. Okay, and then, but because of the experience that I had in framing that is the new curriculum of 2005, then also being a member of the new education policy since 2014. So I said, let me say something about it. And I'm very happy that our chairman started with something that is very, very pertinent. And I made the statement, it was in Baroda University at the invitation of Professor J.N. Devi,
that learning of languages takes place in mother's womb. And then it was just a statement. Then I decided to research on it. But you know, this is a very thorny issue. Who will volunteer? The women have to volunteer, no? When they conceive a child, they have to volunteer. So eventually I got 10 volunteers in Shillong. Then in 2008, more or less prove it that yes, it takes place, because we have to record all the emotions, everything that takes place where the consumption takes place. And really, to our amazement, we found that most of the things that the mother experienced, the child also reflected back later on. So that is in conclusion, I could say it was proven that yes, learning of language and emotions and everything takes place in a mother's womb. So this is the first experience that I have. Then the other experience is in education, says Rabindranath Tagore, that mother language is like mother's milk. This is what Rabindranath Tagore said. However, he was not opposed to any foreign language. Man can freely express his thought in his mother tongue. Tagore has emphasized mother tongue as a medium of instruction for the child's education. He was in favor of comprehensive curriculum which should satisfy child's aesthetic, creative, spiritual, and vocational need. According to me, this statement of Tagore is the foundation of the NEP 2020. Today, finally, what happened? When you are sending your children to school, you immediately ask what you want to be in the future. No? You are already asked what vocation he will take place. So the child is already having an idea in his head that when I grow up, I want to be a doctor, I want to be an engineer, I want to be a teacher, I want to be this, I want to be that. Interestingly, I asked my grandson, what do you want to be? He said, I want to be a plumber. So then I said, why plumber? He said, because I can handle tools. So this is the idea that modern children, they already have beforehand. So therefore, I believe that the statement made by Tagore that the curriculum should satisfy child's aesthetic, creative, spiritual, and vocational as the foundation of the NEP 2020. Now, what is happening today? Are we doing that? Mother tongue help us to better understand our own culture identity. Let me tell you that the Khasis, we are fighting to be included in the age schedule, okay? But we have never got. We don't have the script of our own. We got the Roman script. It was introduced by the Christian missionaries in 1841. Now, how did we preserve our knowledge, our culture? So behind every flower, behind every waterfall, behind every animal, there is a story. So for me, language is not merely visual script, but everything that is within the culture. So that is very important to understand, because if we lose a culture identity, then we lose our language, we lose our thought process. Therefore, that is a very important thing to promote. By promoting the mother language as a medium of instruction, you will help to preserve our country's cultural heritage. That is what I believe firmly. If we want to preserve our cultural heritage, we need to educate in our own mother tongue. India is growing a nation and is determined to be known as a source of knowledge globally. I think you know very well that our Prime Minister wants that we should be known as a source of knowledge globally. For the past few years, the Indian government has been working to transform the traditional education model into a modern EdTech framework, intending to become the greatest knowledge source. In the process of making it possible, the importance of mother tongue in education has been discovered. I think it is not discovered, it was discovered earlier, but it has been strengthened. Now, the National Curriculum Framework 2022 recommend that children be instructed in their Matribhasha, the mother tongue, until they are 8. Then Section 29F of Chapter 5 under the Right to Education 2009 unquestionably states that the medium of instruction
shall as far as practicably be in the child's mother tongue. Then the National Education Policy 2020 advocates, wherever possible, the medium of education will be in mother tongue, local language, regional language, or at least till grade 5, but preferably until grade 8 and beyond. You see, this is the problem of the policy makers in India. We are not sure. We want to play in between. Do we want to teach mother tongue? Do we want to teach language of the regional language? Do we want to teach other languages? We are not sure. That's why we are nowhere. I think all of you here, you must understand, whenever I travel by any taxi, I always have a conversation, strike a conversation with the driver. Ask, how are you, where are you from, or what are your children, where your children study. And most of the time, I find that the taxi driver prefer that the children be sent to the English medium school. Then I said, why English medium? He said, because it is guaranteed that if they go to English medium school, their job is guaranteed. This is the belief. Therefore, you will come to the problems later on. I think the government of India has done wonderfully, trying its level best. I think those who are teachers today and those who are parents, you will know that there is a website, Diksha, where a lot of local content is being offered in local languages. And I think you had a session with Professor Pushpak Bhattacharya. Yeah, he is one of the person who, from IIT Powai, who developed how to teach in the local languages. Because I had worked with him since 1998. So we had worked in this, before the world thought about artificial intelligence, we already developed some of these ideas in then. But our computers were not up to the mark, so we could not achieve anything. Thankfully, today, with the advancement in computer technology, we are able to develop fast. And hopefully that with the participation of people, we will be able to break ground in this field. Okay. Now, there are a lot of benefit on the teaching in mother tongue has been stated by all our experts here. So I will not go anymore because I'll be repeating most of the thing. So I'll go into the problem, the difficulties. What are the difficulties? A given class, take now in a given class, see, take this as a class, okay. How many languages are here? No, so many mother tongues here. So how do we develop a content which is common for everybody? That will be the greatest difficulty. Lack of qualified teachers or instructors. We don't have qualified teachers and instructors. We need to really train our teachers. I think the best example would be Finland. Finland, they go for a massive teachers training and we need to imitate them in order, or even Nigeria, massive teachers training program they go in order to impart the policy of the government. Then there is resistance. Suppose I say, okay, don't send your children to English medium school. There is resistance from everybody. Why? I'm paying my own pocket. Who are you to question me? This is resistance. Now, we are in a program of Sahitya Akademi. Now we have to see what is Sahitya Akademi contributing. As Sir has said that because of Sahitya Akademi we are here, different tribal groups are here, different languages are here. So Sahitya Akademi in its own bit is trying to develop the different literature of the different areas. Take for instance for Northeast, there is a Northeast literature that has been built. Earlier it was in Baroda, now it is situated in Imphal, where the literature of the Northeast has been documented, not only in English, but also in the original language. So you read simultaneously in the English language and also in the original language. So that in that way, Sahitya Akademi is contributing towards the thing. Now, see, by organizing this, what we call a poetry reading session, you don't have poetry reading session only for senior people, you have also for the younger, the youth and all that. So in that way, you are contributing towards the mother tongue. And you see in front the Festival of Letters, you see the children carrying those letters. That itself is a kind of advertisement for children. Look,
come here, you also are taking care. So there will be program definitely for children also. Now, this is in a small way, Sahitya Academy is trying to build in the preservation of the mother tongue. Now, in a bigger way, what the Sahitya Academy can do, I think not only they are giving Sahitya Academy award for the recognized languages in the age schedule, they are also giving Bhasha Saman for unrecognized languages. So in that way, so they are encouraging authors of the unrecognized languages. Now, to sum up, finally, I say, once I was asked, can you give a definition of what is a mother tongue? I said it's a very difficult because you give any definition, there'll be question. So just I said it, and after that it was quoted, and it remained permanently after that. Mother tongue is the language in which you dream. Thank you very much. Good evening. Well, the session ends here. We learned a lot about several aspects of significance of mother tongue from the scholars of different mother tongues. This was quite an exciting and learning experience. On behalf of all of us, I thank Mohan Gehani ji, who chaired this session, Ajit Dubey ji, Madan Mohan Soren ji, Melvin Rodriguez ji, Sylvanus Lamare ji. Unfortunately, Uma Nanduri ji could not make it due to some other engagement. Finally, declaring the end of this session, on behalf of Sahitya Akademi, I heartily thank you all. After this, we will receive the Sahitya Akademi Award winners in the same premises and later move on to the Kamani Auditorium for the Sahitya Akademi Award presentation ceremony. Thank you for being with Sahitya Akademi. Thank you, Krishna ji. Thank you, ji. Thank you, ji. रुको ये फोटो लेना